Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. It's fantastic to have all of you over here. I just want to know if you are able to hear me out very clearly, loudly. Very good morning each one of you. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर और आज Saturday morning, beautiful morning. We are going to learn something fantastic. We are going to do amazing stuff. So ये 2 घंटे आप लोगों के लिए है और यहाँ पर this is going to change the way you ever see the market. It's going to be fantastic. It's going to be amazing. And you are simply going to love it. So क्या करना है, ये webinar होगा 1:15 तक. You have to ensure you are here with me until the end. You will be looking at how to trade markets, looking at candlesticks, looking at volume profile. सब चीजें करेंगे हम बहुत ही सिंपल वे में और Elliott Wave के बारे में भी देखेंगे. So जो GPS of the market कहा जाता है. So I just want to know, before we begin, I want to know how is the Josh today? How is every one of you doing? Very good morning, Paras, Ashwin, Mukesh, Sachin, Vinay, Rohit, Sunil Kumar, Bhanusha, Sunil, Yash, everyone. Very good morning. It's always amazing to see each one of you over here and it's fantastic. So आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है कि आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पर. This is going to be an eye-opening session which is going to change the way you ever see the market. It's going to be very different. It's going to change the way you ever see the market and it's going to be fantastic. तो आगे बढ़ने के पहले बहुत क्विकली मेरे बारे में मैं बताता हूँ. I am a chartered market technician, did clear all the 3 levels of CMT in 2008, 2007, 2008. And I have actually working with Lehman Brothers. Lehman Brothers पता है 2008 में bankrupt हो गया था दोस्तों. And वहां से we can clearly see कि क्या नहीं हुआ. Financial crisis हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, lost my job. And I said यार लाइफ में अगर कुछ करना है तो डिपेंड नहीं रह सकते कोई भी चीज पे. यू नीड टू हैव सम पैसिव सोर्स ऑफ इनकम एंड दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड. आई वाज ट्रेडिंग इन द मार्केट इवन इन 2005, बट 2008 के बाद में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन एलियट वेव टाइम एंड अदर एस्पेक्ट्स. सो इट वाज फैंटास्टिक फॉर मी. यू कैन आल्सो सी you on so people who are trying to connect on YouTube, we are not there on YouTube. There is some problem there. My team is checking. In case, be sure you are here and don't leave this room because we go house full here. So ensure that you are able to be staying here and you are not leaving it. तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. I am also authored a book, Effective Trading in Financial Markets, and यहाँ पर जो book आप देख रहे हैं, that's the book, guys. I have written it, published in COVID 2020, worldwide publish हुई है. You can see me on the various business channels. I have won on CNBC खिलाड़ी नंबर 1. किसी ने देखा था last to last week, and उसके पहले भी मैं consecutively 22% बनाया था उसके पहले वीक में. उसके बाद वाले वीक में I made 19.5% and I won consecutive 2 weeks again. I won nearly 15-20 times. और साथ में एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, I am an engineer. I did way back, long back, and I've been trading market since 2 decades. I've seen every cycle. यहाँ पर लोग 3 महीने से ज्यादा मार्केट में रहते नहीं है. मैं तो 20 साल निकाल दिए. So चलिए आज I'm going to share across my learnings, my knowledge, lot of things that I have been doing. Everything I'm going to share across with you. Let me very quickly ask you, all of you, how is the Josh today? I want to know from each one of you, how is the Josh today? Is the Josh high? Are you people really going to enjoy what I'm going to do today? So I want to know from each one of you, how are you doing today? Fantastic, amazing, super. चलिए, Josh is very high. तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. I'm going to take a very quick poll also right now. I want to know from you all, how many of you are attending this webinar with AKTG for the very first time? पहली बार आशीष क्याल ट्रेडिंग गुरुकुल पे ये कितने लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं? ये पोल मैंने शुरू किया. Ensure guys you are participating in this poll here and it's going to be really interesting. So please participate in this poll so that I can know over here. Okay, great. So many of you are here for the very first time.
and we can clearly see, let me end the poll very quickly. I was just trying to figure out कितने जन है. Okay, wow, more than 50% of the poll are here for the very first time, and that is simply amazing. So let me now very quickly start across with each one of you, and let me share across my presentation यहाँ पर, and I'm going to share it across very quickly, not spending much time. ये रहा. And just ensure that you are focusing here until 150. Don't go anywhere. I'm going to start very quickly now. Are you able to see my screen, every one of you? क्या मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Okay, so चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, and let's just move forward. Wave Strategy Advisors is the independent research firm that I found, and we provide research across equity, commodity, forex markets, across that you can see, and that's a holistic approach. Ashish Kyal Trading Gurukul is to ensure that you are learning the things in the right context, in the right way. बहुत जरूरी है दोस्तों वो करना, and that is what Ashish Kyal Trading Gurukul is all about. I have been speaking at ET Now, CNBC TV18, Blue. I have won a lot of shows. I've already talked about it. And I have won. This is last week and last to last week जब मैं जीता था. You can clearly see making around 14%, 22%, 19%. These are so many shows that I have won, and how my stocks have performed, that too when the markets were falling on the downside. That is what I can clearly see it here. And even on the CNBC TV18 and other places I have won, so I've not spent time. You can see me with my mentor, Martin Pring, Ralph Akampura. I am with there speaking at IIM Trichy. I am speaking at NISM on Elliott Wave Time, and CNBC TV18, I've already talked about it. This is the book that I was talking about, and you can clearly see this book has been endorsed by who's who of the technical analysis world. Zyada time spend nahi karte dosto. These are all the happy faces from the various shows that I have conducted. Let me move forward now. This is, I was also speaking at China Investment Forum, and you cannot believe there were 3,000 participants who were there to learn about time, to learn about this aspect of trading. There were 3,000 participants who were there. Okay, it's very important that you look at this very, very clearly. And my Twitter handle is @KyalAshish. So ensure that you are following me on Twitter, and you are following me there because I'm going to do a lot of things on the Twitter. So let's just move forward. My Telegram group, दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, मेरा जो Telegram group है, that is having nearly 12,000 subscribers. Ensure you are joining the correct Telegram group. यहाँ पे फोन नंबर है. अभी क्या किया, फेक लोगों ने फेक फोन नंबर भी डाल दिया है. Okay, so you want to ensure that you are following the correct Telegram group. And you are also going to ensure we have mentioned that SEBI registered research analyst is mentioned here. So you can clearly understand how to go, कैसे इसे करना है. My colleague will share across the link very quickly. So ensure that you are doing that. You are joining the correct Telegram page and the Twitter link. Is it clear? Let me now move forward very quickly. Just a quick disclaimer over here. And let me now start by showing this simple chart. Okay, please share the Twitter link also with everyone. Ensure you are joining the correct links only. And यहाँ पर अगर आप कोई chart देख रहे हो, you can clearly see over here, this is Nifty. Okay, are you able to see the chart of Nifty here? And you can see this is not from anywhere else. This is from the last week Nifty जो मैंने यहाँ पर share कर रखा है. And what do you make out of this chart? What do you make out of this chart is what I'm trying to ask you. यहाँ पर अगर आप देखोगे,
very clearly there has been an upward thrust of the triangle. लेकिन ये होने के पहले मेंशन किया था दोस्तों, होने के बाद नहीं. So this was mentioned before it happened. Unlike many people who actually do this, are अगर आप मेरा Twitter and those things if you are following, you might have already seen that on the upside where the chart is shown here. So over here, यहां पर जब निफ्टी था ना 17,060 के आसपास, that was the buy level. I've even mentioned it across on the Twitter. We even gave calls to the clients, and our target was 17,280 on the upside. And this is the stop loss. And Nifty ने एक ही दिन में मास्टर स्ट्रोक लगा के 17,280 आ गया. देखिए, amazing चला basis of this pattern. So what you have to understand is that it's very important that you look at the charts and price. दोनों चीजों को देखना है and उसके साथ आपको ट्रेड करना है. Let me move forward now. Bank Nifty was any one of you were there in my last webinar where I talked about Bank Nifty? कोई था मेरे साथ में in the last webinar where I talked about Bank Nifty कि क्या टाइम होगा, क्या कैसे होगा, all of those things? Any of you were there? Okay, I can see so many of you were there in that webinar. आपको पता है मंडे का टाइम दिया था 3:15 का. Do you remember that? Monday time 3:15 which was given, and it was simply amazing. And why that time was given? Because of concept of time cycle. And if you do see that, you will be able to understand कैसे वो इतना accurately work किया, कैसे वो इतना accurately चला, and that's how it works, right? That's the magic of time. So आगे बढ़ते हैं दोस्तों. 3:15 को क्या हुआ देखिए. Exactly बैंक निफ्टी का जो लो था 39,200 के आसपास था, 39,270. Are you able to see that? This was the time that I talked about, 39,270. वहां पर बैंक निफ्टी ने लो बनाया and from there it went towards 40,600, and this was on Monday. This was done together with all of you. Okay, and देखिए ना क्या सुपर चला ये स्पेसिफिक. अगर आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग वे में. एंड नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. यहां पर देखिए गोल्ड के बारे में अगर किसी ने ट्रैक किया होगा, गोल्ड का चार्ट आप देखिए यहां पर. इट वाज सिंपली अमेजिंग बिकॉज गोल्ड के चार्ट पे इफ यू आर एबल टू सी वेरी क्लियरली 49,000 पे जब गोल्ड था, वी वर एक्सपेक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेव थियरी. सी एलियट वेव जो है दोस्तों वो जीपीएस है मार्केट का. ओके, वी कॉल एलियट वेव एज द जीपीएस ऑफ द मार्केट एंड इट वर्क्स अमेजिंग. So basis of Elliott wave, it was discussed that gold will go towards the level of on the upside around 59,000. अगर आप मुझे एक महीने से फॉलो कर रहे, बहुत ही क्लियरली ये मेंशन किया था कि गोल्ड विल गो लाइक दिस. आगे क्या होगा देखिए. वेव थियरी के बेसिस पे गोल्ड ने यहां पर वेव 4 बनाया, कंप्लीट किया वेव 4, एंड वहां पर क्लियरली वेव के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे एट दिस लेवल, एंड देन लुक एट द रैली. तो मेरा टारगेट गोल्ड पे अभी भी 62,000 है, एंड इट इज सिंपली गोइंग टू बी लाइक बाय ऑन डिप्स. काफी जन बोल रहे थे गोल्ड टॉप आउट हो गया. ये नहीं, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड. सो दिस इज द पावर आई एम शोइंग यू. ये चार्ट पे क्या क्या चीजें है, एलियट वेव है, टाइम है, ये दोनों के बेसिस पे फोरकास्ट करना दोस्तों possible and you can forecast it extremely well. Okay, let me now move forward. This is Nifty chart. This Nifty chart was produced on 1st of December when it was around 18,800. Again on the basis of wave theory कि भाई 5 waves complete हो रहा है. After completion of 5 waves, we should start seeing a move on the opposite side or on the downside. Okay, and exactly वहीं पे टॉप बनाया एंड वहां से क्लियरली यू कैन सी मूव ऑन द डाउन साइड वेरी क्लियरली. जहां पर टॉप बना 18,800 पे, सोचो दोस्तों ये टॉप कैप्चर किया था, एंड यहां से वी सॉ अ क्लासिक फॉल
on the downside. So this was 18,800 and we all know where did Nifty went, right? It's simply amazing. लूनार साइकिल के बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में. लूनार साइकिल क्या होता है, कैसे मून फेस पे देखना है, नेक्स्ट पूर्णिमा कब है, अमावस्या कब है और उसका इंपैक्ट क्या होता है. सो टाइम के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट समय में. चलिए शुरू करते हैं आगे के लेवल पे. एंड यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल वे में, इजी वे में. सो जस्ट फोकस हियर. I want you all to be focusing here and not anywhere else. So ensure guys, all of you are simply focused right now on what I am going to do. Okay. And let me just explain it to you, the simple concept. Over here, this is the candle. ठीक है, बहुत ही सिंपल. प्लीज एवरीवन कीप फोकस हियर. दिस इज हाई, लो, ओपन एंड क्लोज. द ट्रेंड विल रिमेन ऑन द डाउन साइड. द ट्रेंड विल रिमेन ऑन द डाउन साइड until we see a reversal candle confirmation. This is going to be as per a simplest Dow theory इसे कहते हैं हम. बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है, एंड इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट द हाई ऑफ दिस कैंडल इज अबाउट द हाई ऑफ प्रायर कैंडल. द लो इज अबाउट द लो एंड द क्लोज इज ऑल्सो अबाउट द हाई. सो तीन कंडीशंस कौन सी है दैट विल कंफर्म दैट द ट्रेंड इज रिवर्स्ड ऑन द अपसाइड. हाई अबाउट प्रायर हाई, low above prior low, and close above prior high. Once these three conditions are satisfied, we can say that the trend has reversed on the upside. And that's why you will be able to objectively decide कि यार अभी buy करना है कि sell करना है. Okay, are you with me? So यहां पर Mr. Maheshwari saying, sir, you are not live on YouTube today. Hope you are having many participants. There is some technical issue where I am not able to go live on YouTube. There are many people who are waiting there. I'm trying to do that, but nahi ho pa raha hai. So people needs to join on Zoom and they have to join now because we are possibly going houseful. So can't really help it. I think some issue with YT. I'm not sure what, but लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है. चलता है, टेक्नोलॉजी ऐसे ही है. You not know when you require the most, it does not work. होता है ना लाइफ में, जब आपको सबसे ज्यादा जो चीज की जरूरत है वो नहीं होती. तो मैं चाहता था बहुत सारे लोग सीखे, लेकिन नहीं. ठीक है, आप लोग आ गए जूम पे तो आप सीख पा रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड लेट मी नाउ वेरी क्विकली explain on this chart again. तो कौन सी तीन कंडीशन है that will confirm that the trend has reversed back on the upside? The three conditions that will confirm that the trend has reversed back on the upside is high above prior high, low above prior low, and close above prior low. So basis of these three conditions, we can say that the trend has reversed back on the upside. Is it clear? Any doubt on this? See, this is the most simplest way and the most important way in which you can possibly trade the market. Very objective, very simple. Is it clear, all of you? Okay, and यहाँ पर ट्रेंड अभी के चार्ट पे देख के हम एनालाइज करने की कोशिश करते कि क्या हो रहा है. So if you are looking at this one, I'm going to explain this again. Do not worry. Just focus here, friends, everyone. This can be applied on any time frame. You can do it on daily, hourly, weekly, 5 minutes, any time frame, any time frame. So you can do that. Mr. Maheshwari, can you also please share across with the participants the Zoom link which we have here on the chat of Zoom, on the chat of YouTube, please? Can you help me with that? I'm going to share across the link with every one of you. Just ensure you can simply click and copy paste it there so that people don't miss out, and tell them to do it fast.
So यहाँ पर है, I've even asked my team to share it on the chat. I'm not sure if they have done it or not. Anyways, let's focus here right now. And यहाँ पर, if you are looking at this chart, we are going to be looking at very clearly the high is above prior high, low is above prior low, and the close. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे, tell me, looking at this candle, was it a bullish candle or a bearish candle? Is this a bullish or a bearish candle? Think about it. This is a bullish candle. Why is it a bullish candle? सोचो दोस्तों, आंसर देने के पहले सोचना ये बुलिश क्यों है, ऐसा क्या चेंज हुआ? The three conditions which we look at changed, right? What are the three conditions? High is above prior high, low above prior low, and the close, which means the trend has changed on the upside. Simple hai. Now yahan par se, if you are looking at this clearly, you can understand that after the trend has changed on the upside, this level was around 17,200. From here, not a single candle has closed except here, which is say around 18,000 approximately. 800 points move on Nifty, not a single candle has reversed on the downside except here. What is the reversal candle confirmation? Low below the prior low, high below the prior high, and close below the prior low. Once these three conditions are satisfied, we can say that the trend has changed. Over here, if you are trading Nifty basis of this price action, ये price action पे अगर आप trade करते हो, you are able to get 800 points. Suppose if you are trading in 4 lots of Nifty, you are able to generate 1,60,000 here. Okay, can you see that? Able to generate that. यहीं पे नहीं, मैं आपको वापस से दिखाता हूं. और एक और चीज का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, you have to check multiple time frame. So I'll come to that later. Now tell me, not only here, you can see the past data. When the trend starts, it goes amazing. Amazing. देखो ना, यहां पर भी अगर आप देखोगे, यहां पर से ट्रेंड शुरू हुआ, एक भी कैंडल until here did not flow. Now tell me, was it the time to turn bullish here? Every one of you, I am asking you a simple question. क्या मैं कह सकता हूं this was the candle which confirmed with the three conditions that the trend has changed on the upside? Three conditions that the trend has changed on the upside. And can I say इतना objective है कि यार amazing है. So powerful candlesticks से कैसे ट्रेड किया जाता है? So trading Nifty using powerful candlesticks method and three conditions, okay, will simply change your perception about market. Is it clear? Now, when I am turning bullish here, majority of the people are looking at this candle and turning bullish. I am saying nahi, हम इस कैंडल पे नहीं, हम इसके पहले bullish turn हो रहे. Okay, I am also repeating one more thing. We are not going to just trade on the basis of this. इसको हम साथ में combine करेंगे time के साथ और Elliott Wave के साथ. Are you with me? This is one of the ways, and we will be also combining this along with time and Elliott Wave. Okay, we will be combining this along with time and Elliott Wave. Over here, let me now explain it to you, this same condition on a weekly time frame. On the weekly time frame, same concept. If you look at this candle, now many of you might say, oh, this is a rejection from the highs.
you will say that ये नहीं चला, ये ऐसा हो गया. No. Can I say this is a bullish candle? No questions asked. I'm simply saying that, can I say ये candle bullish है? People, I want you to interact with me because it's very important for you to understand this concept. Can I say this is a bullish candle? Okay. If this is a bullish candle, I will enter around these levels, which is like 14,500 के आसपास. Okay. From here, not a single candle has closed until this point below the prior candle low. This level is 17,600. Okay. Now, because of this, we have got nearly, just approximate I am saying, nearly कितने पॉइंट्स मिल गए हमें? समझो 17,500 पे आपने एग्जिट कर दिया. You got 3,000 points without a single close below the prior candle low. And suppose if you are trading in just 4 lots, you are able to make money. तो दोस्तों पैसा बनता है. यही नहीं, let me explain you this concept right now over here. Can I say this is a bearish candle with the 3 conditions satisfied? Can I say ये bearish candle है जिसने तीनों condition satisfy की है? Everyone? From here, can I say not a single candle until now? ये जो candle थी almost था, मतलब just वहां पर था जो almost वही high के पास था. Can I say this was 16 weeks? For 16 consecutive weeks, not a single candle has closed above the prior candle high until now. Okay. Can I say the trend has changed? Okay, simple है, every one of you. So we over here, we can say that the trend has changed back on the upside after so many weeks. So can I say my view has now changed back on the upside? After 16 weeks. So will I be trading in the direction of buy, which is use dips as a buying opportunity? Is it clear? Everyone? Okay. Now what I am going to do is I'm asking you a simple question here. If the weekly trend is up, the daily trend is up, on the hourly chart, shall we look for buy or shall we look for sell? We look for buy, right? इतना simple way है देखने का. Try and understand one thing. Let me explain it to you, the concept of trend. Remember friends, the trend is your friend. You should always be trading in the direction of the trend. Remember that one thing very, very clearly, that you should be trading in the direction of the trend. So until it bends, exactly. Suppose if you are there standing on a seashore, you are enjoying looking at the sea, looking at the water coming towards the shore. You are there enjoying with your friends, family member. Imagine you are there. Now the tide, the bigger tide is coming towards the shore and the smaller tide is going away from the shore. When the bigger tide, जो बड़ी tide है, अगर shore के तरफ आ रही है, smaller tide goes away from the shore. Can I say eventually the smaller will turn also towards the shore? बराबर है. Similarly, like the bigger tides carries the smaller ones, in the market, the bigger trend drives the smaller trend. So if you trade in the direction of the trend and trend is your friend, you will make money. It is very important that you are trading with the bigger tide because that's where making money is easy. So आज हम जो कर रहे हैं वो bigger tide कहाँ है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन मैं अभी वापस रिपीट कर रहा हूं, इसके साथ हमें एलियट वेव
और टाइम को भी कंबाइन करना है. ओके, कैन आई से दिस इज अ सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट इट. सो लेट मी ask you one question. How is the session so far? Chabi kiya. Shall I go on the practical chart and try and apply this concept? Apply this concept. How is this session so far is what I am asking. Simple hai. Socho na. Itna easy way से everyone is too confused about engulfing pattern, bearish engulfing, bullish engulfing, this and that and every single thing. What I am asking is, have you ever looked at the concept in such a way? Isn't it awesome? Great, fantastic. It's such a beautiful chart. Everyone is too focused on the news. Fed क्या कर रहा है, RBI क्या कर रहा है, इसका क्या. अरे यार चार्ट पे देखो दोस्तों, ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको चार्ट पे से rather than anywhere else. So you just have to focus on the chart and nowhere else. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. And let me now move forward to a practical chart. Shall I move forward to practical chart and apply this concept, super duper concept? Hourly chart, 5-minute chart पे हम apply करेंगे. Moon day को भी हम देखेंगे. Meanwhile, can you do me a favor? Can you share this invite link with your friends on the WhatsApp, on the group, everywhere? Can you do that for me? Can you share across this concept that I am doing right now with your friends, everyone? The link मैंने दी है. Let them join. अभी तो हम हाउसफुल है, so they might have to wait. कोई निकलेगा तो वो join कर पाएंगे. But do share it across on your Telegram, WhatsApp, everywhere. Jaydev has already shared across. He is saying, Balaji is sharing across. Balaji, you were there even last time, I remember. This is not April Fool. Of course, this is not April Fool. Vandana has shared across. Thanks, Vandana, for doing that. Already invited. Zahir has invited. They are his friends. Vinod, fantastic. Chaliye. Glad, because see, I want people to learn. I know this thing. I'm so excited to talk about it. And I want every single one of you to learn this concept. And that's why I'm doing it for you. So meanwhile, मैं मेरा चैनल ओपन कर रहा हूँ. यहाँ पर ट्विटर नहीं, मेरा ट्रेडिंग व्यू मैं ओपन कर रहा हूँ. सो meanwhile, just ensure you are inviting every single one of you, of your friends. Balaji, mentorship student, yes, of course. So it's great to always see mentees here around, and it's always lovely to see them. So चलिए आगे बढ़ते हैं. Let me now open up my trading view very quickly, and let me just explain this simple concept in an easiest possible way that you could never have imagined. I'm going to apply this concept on every single chart. Let me just go across and do that for you all. चलिए, वंदना wants to join the mentorship program. वंदना चलेंगे, आएंगे, डिस्कस करेंगे उस चीजों के बारे में भी. यहाँ पर right now I'm going to share across my trading view. Are you able to see my trading view screen, every one of you? Okay, now over here, I'm just going to zoom in the chart. And यहाँ पर अगर आप देखोगे, this is on the daily chart. Daily chart has turned on the upside. So I'm going to go on the 1 hour chart now. Look at this concept. Simply look at this concept, huh? Friends, it's very important. Now, if you are looking at this, okay, you can clearly see the hourly trend has turned back on the upside. Do you agree with me? Every one of you? The hourly trend has turned back on the upside. At what level? The hourly trend has turned back on the upside at the levels
Just a second. Where is my chart gone? Oh, what is this happening? So there is some technical issue, I suppose, today. So screen has changed, right? Yeah. That's what I was wondering. Ki chart kahan chala gaya? Now it is okay. Are you able to see it now? So can I say this is the candle where hourly trend turned positive? And also this is the candle where daily trend also turned positive. So can I say very clearly that agar mujhe buy karna tha, this was the classic entry level basis of hourly candlestick method, 3 conditions. What was this level? This level was around 17,060. What can be my stop loss? My stop loss will be previous candle low minus 20 points. Why do we have to keep it as minus 20 points from the previous candle low? स्टॉप लॉस हंटिंग सुना है आप लोगों ने? स्टॉप लॉस हंटिंग का मतलब होता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, they try to take prices exactly at that low and trigger it. But you are smart now. You are here in this webinar. I want you to be smart. How can you be smart? You are ensuring that the stop loss is not getting triggered. You are giving a leeway of 20 points from here. तो आपका stop loss 6940 नहीं होगा, 16920 होगा. ठीक है, क्लियर है? प्रीवियस कैंडल का लो रख दिया हमने, तो यहां पर मैंने स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो सेट कर दिया. ठीक है, द नेक्स्ट कैंडल केम आउट हियर. दिस इज द लो, दिस इज 16,980, इससे थोड़ा नीचे 16,960 पे स्टॉप लॉस लगा दिया. दिस इज हाउ यू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस. नाउ सपोज यहां पर रिस्क कितना है हमारा? 100 पॉइंट्स का रिस्क है. 100 पॉइंट के सामने दिस इज द 100 पॉइंट रिस्क दैट वी हैव. Against that 100 points, what is the reward that you are getting right now? Can you do the math, please? 17,060 से आपने बाय किया है, फ्रेंड्स. नॉट अ सिंगल कैंडल, एक भी कैंडल प्रायर लो के नीचे बंद नहीं हुई. नॉट अ सिंगल कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो प्रायर लो. 300 points on Nifty in just less than 2 days. मतलब ये एक दिन है, ये तो हाफ डे भी नहीं था, लास्ट का 1 घंटा था खाली. इमेजिन इफ यू आर ट्रेडिंग इन 4 lots of Nifty, you are going to make up 60,000 in 4 lots of Nifty in just 2 days. What was your risk? चलिए देखते हैं दोस्तों, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है. रिस्क was 100 points and your reward is 300 points. Risk to reward 1:3. बना ट्रेड. एंड मैं ये नहीं कह रहा खाली इसी पे करेंगे. दिस कॉन्सेप्ट you can apply even for intraday. You can apply it on commodity charts. You can apply it on any and every time frame, friends. And I am giving you this science. This is a scientific approach to trade. Okay. Now यहाँ पर हम चलेंगे 15 मिनट के चार्ट पे. 15 minute chart. We are going to go on a 15-minute chart looking at the same concept. Same concept पे यहां पर 15 minutes के चार्ट पे मैं अप्लाई कर रहा हूं. Look at that. Let me just clear off the screen. Look at this movement. Now I am going to ask you one thing. You have to answer me very clearly. Intraday के लिए यहां से यहां पे मूव मिला. Wow. Will you sell on these candles? Think before you answer. क्या आप यहां पर सेल करेंगे? Will you sell on these candles is what I am asking you. Because no, you will not sell. Fantastic, Rashmi, Shambhu, Kamal, Lalit, amazing, Nishant, Genesis. You will not sell on this candle. The reason being, hourly chart, bigger tide. So whenever you get confused, imagine yourself on the seashore looking at the tide. Where is the where is the bigger tide? The bigger tide that you are seeing is clearly on the upside.
So you will rather wait for buying opportunity, and this was again your opportunity. And imagine from here, not a single hourly candle, not a single hourly candle, no hourly 15 minutes candle has closed below prior candle low. 15 मिनट का चार्ट है दोस्तों। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी अगर आपने किया होता ना, 17,260 से लेके 17,350 तक का मूव मिल गया, नियरली 90 पॉइंट्स ऑफ मूव। प्रीवियस कैंडल का स्टॉप लॉस भी लगा के लो लगाया होता तो आपको हार्डली 50 पॉइंट का एसएल था, हार्डली। इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, अमेजिंग चीज। इज इट इंटरेस्टिंग गाइस, एवरी वन ऑफ यू? So I am now going to also talk about options. Before talking about options, I want to know how many of you here are trading in options. I'm going to launch a very quick poll. How many of you are trading in options? Poll में participate करिए दोस्तों. I want to know how many of you are trading in options, because ultimately options से master पैसा बना सकते, छोटा सा पैसा लगा के बड़ा पैसा बनाने की गुंजाइश है। ओके, सो हम, वाओ, सो मेनी ऑफ यू आर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस, फैंटास्टिक। नाउ यहां पर इफ यू वांट टू जनरेट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम, या आप जॉब कर रहे, पैरेलली आपको कोई इनकम जनरेट करनी, ऑप्शंस के साथ करना पॉसिबल है। कैसे कर सकते वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है? And let me now go here, explain the concept of wave theory. Shall we enter into the world of wave theory now? एक चीज समझना, भाव भगवान छे, प्राइस इज गॉड, समय बलवान छे, टाइम इज शक्ति, एंड ट्रेडर पहलवान छे। You have to be disciplined. इफ भाव भगवान छे, समय बलवान छे, ट्रेडर पहलवान छे, तो पैसा बन सकता है मार्केट से ट्रेड करके, क्योंकि आपको प्राइस पता है, प्राइस की शक्ति समय है, टाइम पता है, और आप डिसिप्लिन वे में ट्रेड कर रहे हो। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर फॉलोइंग एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ। विनय, थैंक यू वेरी मच। सो इट वर्क्स गाइस, ये मस्त चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, आपके पास में कोई भी इतनी अच्छी चीज होती है तो डोंट यू वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड? यू वांट टू डू दैट बिकॉज इट वर्क्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इट हियर। सो आई एम गोइंग टू टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ एलियट वेव। अश्विन चरण सिंह, मजा आ गया, मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत मजा आ रहा है, और दुख भी हो रहा है जो लोग यूट्यूब पे थे वो मिस कर जा रहे, लेकिन क्या कर सकते। चलिए एक और बार मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा 2013 का। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू अ चार्ट फ्रॉम 2013. इट्स गोइंग टू चेंज द वे यू एवर थॉट अबाउट द मार्केट, एवर। आज तक आपने मार्केट ऐसा पॉसिबल है सोचा नहीं होगा। अगर 2017 में, ओके, आर यू एबल टू सी दिस चार्ट? इफ in 2013 में, I'm so sorry, if someone would have told you that market को ट्रेड करने के लिए आप फोरकास्ट कर सकते हो 8 साल बाद क्या होगा, आप विश्वास नहीं करते थे। I am going to tell you something phenomenal. This research that you are seeing here was published in 2013 July 25th. What was so special about this research report? It was sent across to the clients. In this research, it was mentioned clearly that Sensex will touch 61,000 level. Sensex will touch 61,000 level by 7 to 8 years of time. At that point of time, Sensex was quoting around this level was 18K के आसपास। क्या टेक्निक अप्लाई की हुई यहाँ पर? एलियट वेव। ये जो आप काउंट देख रहे हो, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ एलियट वेव एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। समय और प्राइस दोनों बहुत जरूरी है देखना।
because before the time you will not get anything. So people don't focus on time. I am telling you, focus on time, then only you will be able to make money from the market. यहां पर ऐसा हुआ क्या, देखते हैं क्या हुआ, क्या लिखा गया था इस रिसर्च में, वो देखते हैं नीचे. In this research, it was mentioned Sensex can touch 61,000 level by 2020. 272 वीक का टाइम साइकिल है, और ये भी लिखा था 10% ऑफ लीवे देना पड़ेगा, मतलब 27 वीक्स डिले हो सकता है. सेंसेक्स 27 वीक अगर डिले होगा, which means that from December 2020 से 27 वीक किया तो 7 महीने बाद जुलाई 2021 सेंसेक्स should be 61,000 level. Sensex should be 61,000 level by July 2021. And Sensex ने October 21 में 61,000 level touch किया. Can you imagine that? Sensex touched 61,000 level in October 2021. 8 साल पहले अगर किसी ने आपको ऐसा बताया होता, you wouldn't have believed it. And despite of COVID 2020 crash, imagine COVID crash हुआ, मार्केट फिर भी रैली होता गया, और टारगेट जो आना था वो आया. Despite of US elections that happened, despite of India elections that happened, despite of India-China event rift happened, India-Pakistan rift happened, so many things happened, लेकिन मार्केट ने किया वही जो उसे करना था. Let me also show you something more astonishing. Bank Nifty chart, if you are looking at here, you can clearly see Bank Nifty target was 40,000. Bank Nifty should touch 40,000 level was mentioned here. And ये कब किया था हमने mention? जब Bank Nifty ट्रेड हो रहा था कितने पे मालूम है? 12,000 पे. And it was also given with the time frame. ऐसा नहीं हवा में बात की है, clearly लिखा भी है that the level of 26,000 and 40,000 might sound irrational or crazy at this point of time, but it is possible. And Bank Nifty touched that level of 40,000 in October 2021, जहां पर मार्केट ने टॉप बनाया दोस्तों, और वहां से आज तक करेक्शन ही चल रहा है. आप बोलोगे नहीं, सेंसेक्स ने 61,000 निकाला बाद में, बराबर है, लेकिन अभी भी कहां पर है? कैन यू टेल मी वेयर इट इज? Even now, can I say Sensex is still not done anything but corrected since October 2021? मतलब जो फोरकास्ट 2013 में किया गया था वो 2023 तक चल रहा है. Imagine, can you beat that? Can you imagine that? I'm telling you, this is the science I'm talking about, and I'm revealing it to you all. You want to know when this trend of downtrend जो चालू है वो ब्रेक होगा? It's going to start from June 2023. Another bull market can start from June 2023. वो क्यों है वो डेट, मैं आपको बताऊंगा. I am going to give you a complete logic and science why June 2023. चले आगे. Is it amazing? समझ में आ रहा है आपको? ऐसा पॉसिबल है दोस्तों. कैसे किया गया, ये क्यों किया, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसे पॉसिबल हो सकता है. इसीलिए तो मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ. और यही नहीं, आज से 2026 तक क्या होगा वो भी मेरा ब्लूप्रिंट रेडी है. इसे कहते हैं ब्लूप्रिंट बेसिस ऑफ वेव थियरी. क्यों कहते हैं ब्लूप्रिंट? कोई भी कंस्ट्रक्शन करने के पहले आप एक ब्लूप्रिंट तैयार कराते हो आर्किटेक्ट से, एंड देन यू मेजर वेदर दैट कंस्ट्रक्शन इज इन लाइन विद द ब्लूप्रिंट और नॉट. Similarly, Elliott Wave is the GPS of the market. GPS अगर होता है, suppose if you want to go from Mumbai to Delhi, and if you have a GPS, can I say your life becomes so easy? It does not mean you don't have to stop. It does not mean you don't have to take a D route. You will do that. Similarly, market का एक blueprint ready करते हैं हम Elliott Wave के साथ, एक GPS के साथ, and then we decide whether market is following that blueprint, whether it is going as per that, or it's not going as per that. Is it clear? So this is basis of the blueprint of the market. Elliott Wave is the GPS. Once you have the GPS, your anxiety comes down. होता है. अगर आपको पता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में,
कैन आई से योर एंजाइटी विल कम डाउन? अगर मुझे पता है यार 90% चांस है मार्केट ऊपर जा रहा है, कैन आई से नाउ आई हैव अ पावरफुल वे ऑफ प्राइस एक्शन टू कंफर्म दैट? That's what I'm going to do. Now I'll also share across something very interesting. If you have been following me on my Twitter handle, let me just very quickly share across my Twitter handle with you all. Over here, can you see the tweet? Over here, you can clearly see the Twitter. I have mentioned clearly कि क्या होने वाला है होने के पहले मॉर्निंग में. I keep tweeting over here clear levels दिया है. Nifty to open gap up from time on previous day, and it worked so precisely. You can even go and check what was mentioned on the previous day. Q breakout था, basis of this Bollinger Bands breakout technique. So many things I am sharing across. पॉजिटिव टाइम जोन ये देखो दोस्तों. खाली निफ्टी ये कभी का था 28 मार्च पे मॉर्निंग में. निफ्टी इज गोइंग टू एंटर टुमारो एट 11:15 AM, मतलब 29 को मॉर्निंग में मार्केट बाय में जाएगा. 17,060 अगर ब्रेक हुआ, 17,060 इफ ब्रेक्स, निफ्टी विल टर्न पॉजिटिव. 6,900 शुड रिमेन प्रोटेक्टेड, एंड इट वर्क सो ब्रिलियंटली एक्यूरेट. Is it clear? So that's the Twitter handle I'm just sharing across with all of you. Let me now also show you my website wavestrategy.com. यहाँ पर आके आप देख सकते हैं. There is an article section here. On the article section, you will be able to see various articles हमने publish किया हुआ है. You can simply go and read from here. So यहाँ पर अगर आप देखोगे, this is Reliance का chart. Reliance की इस पे ये जो concept है ना, this concept that you see here is known as volume profile. इसे कहते हैं volume profile. वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब होता है वो प्राइस पॉइंट पे कौन सा वॉल्यूम्स कहां पर हो रहा है. दैट इज व्हाट वी कैन से लुकिंग एट दिस वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट. सो आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस थिंग्स. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिलायंस के बारे में. वॉल्यूम प्रोफाइल क्या बता रहा है, कहां पर है, कहां जा सकता है, एवरीथिंग अबाउट रिलायंस. कैन यू टेल मी वेयर इज रिलायंस राइट नाउ? व्हाट वाज द लेवल ऑफ रिलायंस क्लोज ऑन फ्राइडे? कोई बोल सकता है कल के दिन में रिलायंस कहां पर बंद हुआ था? 2335 के आसपास, अराउंड दैट एरिया. 2330, 2334 के आसपास. कैन यू सी दिस लेवल? रिलायंस यहां पर बंद हुआ है. वाओ. क्यों यहां पर बंद हुआ? 2331 पे बंद हुआ, राइट? ये लेवल दिख रहा है आपको 2330. रिलायंस कहां था वो टाइम पे? देखो ना, 2246 पे था दोस्तों, और यहां पर आके रुका है. कैन आई से दिस इज अमेजिंग. This is what the big players are doing. Big players activity is what we are seeing from here. What we are seeing is the big players activity here. सोचने वाली बात है कि नहीं? 2331 एंड ये लेवल कभी का, ये रिसर्च पब्लिश हो चुका था वेबसाइट पे. कौन सी डेट पे? देखो तो सही आप जाके. 23 मार्च को, 23 मार्च को ये लेवल्स मेंशन था, एंड रिलायंस आज वहीं पे है. सोचना ये लेवल्स कैसे मैजिक है. दिस इज मैजिक. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और मैं आपको लेके चलता हूं अभी फिबोनाची की दुनिया में. हैव यू हर्ड अबाउट फिबोनाची? वी आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एलियट वेव. इफ यू लुकिंग एट दिस, स्कूल में किया होगा थोड़े जनों ने. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. व्हाट इज फिबोनाची सीरीज? 1 + 1 is 2. 2 + 1 is 3. 3 + 2 is 5. 5 + 3 is 8. You keep adding one number by the prior number. You get a series which is known as a Fibonacci series. This series is known as a Fibonacci series. If you divide one number by the prior number, you get a golden ratio, 1.618 times. The golden ratio, the golden rectangle, spiral all exist. Now, why is this Fibo number so important? इसका इनवर्स लिया तो you get 0.618.
1 divided by 1.618 is also 0.618. Now this is the magical number. This is the magical number because this is existing everywhere in the universe. पूरे universe, पूरे ब्रह्मांड में ये ratio exist होता है. Everywhere, pyramids, Mona Lisa painting to human DNA, everywhere it exists in that ratio. So it exists even in stock market. Now, how is Elliott wave related to Fibonacci? Let me explain it to you. So I'm going to explain in a very simple way what is Elliott wave. See, I have come here as commitment to ensure you are giving your time to me. You should get value out of it. So now we enter into the world of the GPS of the market, and it's simple. What is this GPS suggesting? Let me explain it to you over here. Elliott wave was found by R.N. Elliott in the year 1930s, if I remember correctly, and he was an accountant for most of his life. At the age of 65, he discovered this technique, 1934. Thanks, Sunil, for that, to be precise. At the age of 65, he discovered that 65 की age में there is something which is naturally progressing. मतलब naturally governed है. हम नहीं कर रहे, ये natural है. You world population, you car sales, everything is naturally governed. Similarly, stock market is governed by human psychology, crowd psychology. It is governed by that. So he said everything moves in the steps of 5 and 3, which means that we have 5 steps forward, 3 steps backward. This 5 steps forward is known as progression. 3 steps backward is known as regression. Okay. This we mark it as 1, 2, 3, 4, and 5. And we call it as A, B, and C. Okay. We start from this point. The first 5 is known as impulsion. This is known as correction. This is the 2 part of Elliott wave. There are rules to it. We are not doing the rules now. I am just trying to explain it to you. What is the pattern looking like? 5 steps forward, 3 steps backward. However, this 5 steps forward also consists internally on smaller waves. Again, the same example. The smaller tides combine to form bigger tides. The bigger tide combine to form much bigger tide. That's how the entire formation happens. Similarly here, the smaller tide, say 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. So we get corrections are labeled as ABC, impulse is labeled as 1, 2, 3, 4, 5. So I can say that this one is again consisting of 1, 2, 3, 4, and 5. And this correction is A, B, and C. Wow. Similarly, if I am connecting the bigger moves on the upside, and this one. So this becomes my 1 and this becomes my 2. Are you here with me? Are you understanding? Everyone? So over here, what is now crucial? What is now crucial to know that over here, I can very clearly say that the bigger wave combine to form smaller, which means if you are an investor, you need to look at weekly chart. If you are a swing trader, you might want to look at hourly and daily chart. If you are an intraday trader, you might want to look at 15-minute chart, which means that if you know Elliott wave, you apply it on a damn 5-minute chart to a 15 minutes, to an hourly, to a daily, to a monthly, to 100 years down the line. You can forecast the market right from here, right from the very next minute to the next 100 years. That is the power I'm talking about. With great power comes great responsibility. So you have to ensure if you use Elliott wave, you use it in the correct way. Otherwise, it will backfire.
Elliott Wave is a science. You can apply right from the very next minute. I can predict what is possible scenario. Possible scenario. सोचना मेरा हर एक वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है. सो हर एक वर्ड पॉसिबल सिनेरियो का मतलब है 100% नहीं, 90% हो सकता है, 95% हो सकता है, 70% हो सकता है. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी. ओके, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी. जो लोग इधर 100% सर्टेनिटी के लिए आए वो लोग पैसा नहीं कमाएंगे. अगर कोई बोलता है कि ऐसा 100% होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, बिकॉज मार्केट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू विथ मी? So do not ever imagine and say that it is 100% sure short stuff. It is not 100%. This is about Elliott Wave. Shall we move forward now? Great power comes great responsibility, Spider-Man. Of course. तो भाव भगवान छे दोस्तों, इसलिए हमें पहले शुरू करना है प्राइस एक्शन, जो मैंने आपको 3 कैंडलस्टिक कंडीशन बताई. फिर आना है एलियट वेव की दुनिया में, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, और फिर हम चलेंगे टाइम की दुनिया में. तो चले एलियट वेव प्रैक्टिकल चार्ट पे अप्लाई करने के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि भाई एलियट वेव के हिसाब से बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है. शेल वी डू दैट एवरी वन ऑफ यू? चलिए चलता हूं मैं आगे. मेनी ऑफ यू आर सेइंग नॉट एबल टू ज्वाइन इन, कांट हेल्प इट. एज आई सेड, आपको 15 मिनट पहले आना था, नहीं आ पाए तो आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे. चलिए आगे चलते हैं. लेट मी नाउ एक्सप्लेन इट टू यू वेरी क्लियरली इन अ सिंपल वे ऑन द चार्ट इटसेल्फ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज. Over here, just a second. I'm going to open up the chart. Meanwhile, can you do me a favor? Meanwhile, when I'm opening up the chart to explain it to you, can you still invite on the groups? Because few people live in, they will be able to join in. If someone lives in, they will be able to join in. So meanwhile, can you help them join in, please? By sharing it across the link which I am giving it to you, to all of your friends and everyone. Can you do that, please? Okay. यहाँ पर I'm just opening up my screen. Over here, I'm just sharing across the chart. Okay. Fantastic. And I am going to open up Bank Nifty. So over here, what I am trying to do is that I'm trying to show you how Nifty looks like right now and from where we started and how it went. So this is Nifty ka chart. I'm again going to start fresh on Nifty, clearly on a blank chart, and explain it to you on a 15 minutes time frame and how it has to happen. So if you are looking at Nifty from this point, this was 1, this is 2, wave 3, wave 4, wave 5 happened here. This was A, B, C. यहां से लग रहा था नीचे का ट्रेंड नीचे शुरू होना चाहिए, लेकिन यहां डबल बॉटम बना के निफ्टी जैसे ही इस लेवल के ऊपर रिवर्स हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया, which means this fall that we saw was only wave X. Only wave X, which means यहां से फिर से हमें एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है. और यहां पर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लूंगा दोस्तों. आई एम टेकिंग दैट फिब रिट्रेसमेंट ऑन दिस चार्ट from this point, and from here, if I take a Fibonacci retracement combining at these levels, I can clearly see the 61.8% level comes to around 17,420. अगर मैंने थोड़ा सा प्रॉपरली मेजर किया, 17,420 का टारगेट मुझे यहां पर निफ्टी का मिल गया है. और अगर निफ्टी 17,420 के ऊपर बंद होता है, this is 1 hour chart, then my next padav for Nifty will be 17,555. Are you with me? And guys, there are thousands of participants here, so please pardon me if I'm not able to
answer your queries or doubts. So just ensure that you are here with me and not getting distracted. अगर मैं आंसर नहीं कर पाऊं, आई एम नॉट इग्नोरिंग यू. सो पीपल थिंक दैट आई एम इग्नोरिंग देम. प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है. आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी क्लियर. समझ में आया? आर यू हियर विथ मी एवरीवन? ठीक है. अभी मैंने क्या किया? व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज दैट आई एम अप्लाइंग Nifty Elliott Wave counts with clear targets derived using Fibonacci retracement methods and path ahead. आने वाले दिनों में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं. यहां से once you have done that, okay, once you have done that over here, once you have done that, now you have to look at price action. What is price action suggesting? Which means the trend is going to be bullish. Until when? Until we see a hourly close below prior candle low. So tell me, now I am asking you all, are you there, options traders? Are you people there with me? In this kind of a scenario, if I have to trade options, tell me, is the risk reward favorable to buy at 17,420? या ये तो मेरा टारगेट था यार, अभी मैं अगर 17,360 पे बाय करूंगा तो ज्यादा स्कोप नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन मुझे ट्रेड करना है. फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है आप लोगों को? यार रह गया, लेना था, भूल गया, कुछ हो गया, बॉस ने बुला लिया, ये हो गया, वो हो गया, एंड देन होता है कि नहीं? देन यू रियलाइज कि यार करना चाहिए था, नहीं हुआ. ऑल ऑफ दोज थिंग्स. इज इट? आर यू विथ मी? सो यहां पर very very clearly you can now see risk reward is not favorable. So if the risk reward right now is not favorable, then how do I trade? If the risk reward has not favorable, sell puts. Fantastic, Rashmi, great to see you also. Yes, she's the current mentee. Knowing me, I think Rashmi, you know me for what, 10-12 years now? Shalini, great to see you also here. Sell puts, 12 years. See, I remember the time. ओके, एंड यहां पर अगर हम देखेंगे, यू आर हियरिंग टू साउंड्स. आई एम नॉट श्योर एवरीवन इज हियरिंग टू साउंड्स हियर, कि एक ही साउंड आ रही है? आई जस्ट हियर वन साउंड. आई एम नॉट हियरिंग टू साउंड्स. वन. ओके, सो आई थिंक समवन इज एकोइंग इन योर माइंड कि जाग जाओ दोस्तों, उठ जाओ, अभी ही समय है, सीखो, समय बलवान है, टाइम मत गवाओ. तो देखते हैं यहां पर आगे क्या होने वाला है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहां पर हम देखेंगे, सो फोरकास्ट क्या है बेसिस ऑफ एलियट वेव. यहां पर यू कैन सी फ्रॉम हियर prices can possibly go up here, and then wait and wait. Wait for what? Wait for the move on the downside. Okay, after this move on the downside, will you be selling this? No, you are not selling it yet. You will not sell it yet. Why? Can you tell me? Why will you not sell in this candle? Okay, you will not sell with this candle because the overall trend is positive. डेली कैंडल पे जो ट्रेंड आप देख रहे हो वो पॉजिटिव है. सो यू आर नॉट गोइंग टू सेल ऑन दिस कैंडल. आर यू विथ मी एवरी वन ऑफ यू? क्लियर है ना? You will not be selling here. Now you will wait for an opportunity to buy again. When will you buy? As soon as the hourly time frame turned up, what will you do? You will now, as soon as the hourly time frame is turned up, you can start selling put options. कौन सा put option sell करेंगे मैं आपको बताता हूं. ये जो अप ट्रेंड है, can I take a Fibonacci retracement of this?
if this uptrend has to be intact, can I say for this uptrend has to be intact, इसका 61.8% रिट्रेसमेंट नहीं होना चाहिए, उतना नहीं जाना चाहिए. So can I say 17,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए निफ्टी for the uptrend to be intact, which means can I sell 17,000 का put option? Guys, I'm asking you, हम put option क्यों बेचने की कोशिश कर रहे हैं अभी? Because right now the risk reward is not favorable. If the risk reward had been favorable, I would buy call option for sure. तो अगर हमें यहां से, so let me again re-explain it to you, don't worry. अगर हमें यहां से ऐसा मूड मिलता है, I will use that as an opportunity to enter and sell options. Now आप सोच रहे यार मैं तो ऑप्शन बायर हूं, सेल नहीं करना है तो कैसे करें? चले 5 मिनट के चार्ट पे, चले 5 मिनट पे एलियट वेव अप्लाई करने के लिए. Shall we do that? Are you excited to see this thing? I am now on a 5-minute chart. 5-minute chart. And you will be shocked what I am going to show it to you now. You will be shocked to look at the wave count. यहां से शुरू करना है 1, 2. इसके अंदर का आपको मालूम है स्मॉलर डिग्री मैंने बताया, दिस इज 1 and 2. दिस इज 5-minute चार्ट ऑफ निफ्टी. स्मॉलर 1, स्मॉलर 2, स्मॉलर 3, स्मॉलर 4. कैन आई से दिस इज 5th गोइंग ऑन. 420 का टारगेट आएगा 5th, ये कंप्लीट करेगा 3rd. इसके बाद क्या होगा? वापस से वेव 4th आएगा नीचे, टाइम पास करेगा मार्केट 4th, और फिर आएगा हमारा 5th लेग वापस ऊपर. तो ये बन गया मेरा जीपीएस. दिस इज द जीपीएस ऑफ एलियट वेव. मिला जीपीएस मार्केट का? आर यू गाइस हियर? समझ में आ रहा है? तो मतलब ये कंप्लीट होने के बाद में मुझे एक रिट्रेसमेंट मिलेगा. वो रिट्रेसमेंट अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए कॉल बाय करने के लिए. नहीं, लेकिन मुझे तो मंडे को सुबह ट्रेड करना है, तो पुट सेल करके रखो ना. कौन सा पुट? 17,000 बनेगा पैसा. और कॉल अगर बाय करना है, 5 मिनट्स का चार्ट है फ्रेंड्स. दिस इज 5 मिनट चार्ट. सो लेट मी गो हियर, री एक्सप्लेन इट टू यू वेरी क्विकली इन अ सिंपल वे. मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं. कीप इट इजी, कीप इट सिंपल एंड यू कैन मेक मनी. दिस वाज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, 2 हियर अगेन, 3rd आया, 4th आया, this is 5th, completed 3rd year. We will see some kind of a correction. टाइम पास करेगा, ऑप्शन वैल्यू गलाएगा, आपके पुट को पैसा बनाएगा, यहाँ 4th कंप्लीट करेगा. जैसे ही वापस से अवरली ट्रेंड पॉजिटिव टर्न हुआ, यहां पर आप राइड करेंगे 5th वेव के लिए बैक ऑन दी अपसाइड, विच मीन्स दिस इज हाउ इट कैन मूव. यहां से इमीडिएटली नीचे आएगा बोलना मुश्किल है. हो सकता है क्या होगा? 3rd वेव कंप्लीट हुआ है? नहीं शायद. क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? 17,420. तो निफ्टी पहले क्या टच करेगा? निफ्टी टच करेगा 17,420 के आसपास का लेवल. 17,420 पे टच करने के बाद निफ्टी क्या करेगा? यहाँ पे 5th कंप्लीट करेगा ये वाले इंटरनल 3rd वेव का. ये कौन सा लेवल मिला मुझे? 17,420 पे. तो क्या मैं बाय करूं 420 पे? नहीं, मैं वेट करूंगा पुट सेल करके पैसा कमाने के लिए, बिकॉज यहां से मार्केट टाइम पास करने वाला है. एक बार मार्केट का टाइम पास शुरू हुआ, वोलेटिलिटी कम होगी, पैसा आपको बनेगा, फिर आपको एंट्री मिलेगी अच्छी खासी 17,240 के आसपास, क्योंकि ये प्रीवियस 4th वेव का सपोर्ट एरिया है. वो सपोर्ट लेगा, फिर बाय करना है हमें यहां पर कॉल ऑप्शन. और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कौन से टाइम पे भी शेयर बाय करना है. समझ में आया कि नहीं आया? ये है हमारा जीपीएस. क्या ये ब्लूप्रिंट है तो हमें इसी हिसाब से ट्रेड करना है, हमें और कुछ नहीं करना है? नहीं, ये जीपीएस है, इसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है. लेकिन प्राइस एक्शन, भाव भगवान छे, प्राइस के साथ चलना है और समय को भी देखना है. इज इट क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वेव थियरी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. चले आगे.
चले समय के साथ जुड़ने पे ये 5 मिनट का चार्ट है. आई एम टेलिंग यू दिस इज GPS, which we call as GPS, Elliott Wave. On how much time frame chart? 5 minutes. ये 5 minutes time frame है friends. This is 5 minutes. And this works amazing. ये GPS पता है, इसका मतलब क्या ऐसा ही होगा? नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है. यहां पे हम क्या कर रहे हैं? सेल 17,000 का पुट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि 17,100 का स्टॉप लॉस है हमारा. क्यों 17,100 का स्टॉप लॉस है? क्योंकि ये है 61.8%. देखो ना, मैंने पूरा ब्लूप्रिंट रेडी किया है यहां पर वेव थियरी के बेसिस पे, पूरा ब्लूप्रिंट. और अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते, ये ब्लूप्रिंट बहुत जरूरी है. तो एंजाइटी नहीं होगी, डर नहीं लगेगा. यू विल बिकम अ फियरलेस ट्रेडर. डू यू वांट टू बी अ फियरलेस ट्रेडर और अ फियरफुल वन? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम बोलते हैं ना, वही चीज जीपीएस में बात कर रहा हूं, जो गाड़ी में नेविगेशन के लिए यूज होता है. हम मार्केट में नेविगेट कर रहे हैं. Now I am going to take you to the world of volume profile, big players activity. Do you want to see that? Shall we go there? Everyone. So किस तरीके से इसे यूज करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं. उसके लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए, लेकिन ना अभी मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए. ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, एंड यू विल बी शॉक्ड टू सी हाउ अमेजिंग इट वर्क्स. अमेजिंग. बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूं बिहाइंड द सीन्स. चले आगे बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी देखने के लिए. एंड दोस्तों बने रहना यहां पर. मैं आपको जो अभी दिखाने वाला हूं, यू विल बी अमेज्ड कि क्या चीज है यार ये. मतलब बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनके साथ में वेव थियरी कैसे हम कंबाइन करेंगे, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं. So let's just move forward here now. I want to ask you all again. Shall we go on to the next concept of time and wave theory? Let me ask you, how is it? I'm asking you again, every one of you, how is it so far? Our journey together. I am just your mentor. I'm just guiding you. But I want to know from each one of you, how is it so far? Fantastic. Super. चलिए, अच्छा है. Amazing. Awesome. So now I'll move forward. Super से भी ऊपर. Okay, चलिए. Beautiful. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इजी है. If I can do it, friends, you can for sure do it. So don't ever think कि आप नहीं कर पाओगे. आप कर सकते हो. चमत्कार है ये. Okay, let me now get back to you on this specific chart. Are you able to see this chart here now? ये जो दिख रहा है ना आपको, look at it. We will trade with big players. देखो दो ऑप्शन है. I worked with hedge funds. I was in US for some time. I worked with Nomura. I was in UK when I was working there. And यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बिग प्लेयर्स, बड़े प्लेयर की एक्टिविटी के बारे में बता रहा हूँ. यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस इज द पुट ऑप्शन. ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज पुट ऑप्शन. ओके, दिस इज पुट ऑप्शन. और ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये होता है कॉल ऑप्शन. लुक एट इट लाइक अ वॉल. ये है ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. इसे कहते हैं ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल. इसके बारे में हम बहुत डिटेल में करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस प्रोग्राम में, जो 15-16 अप्रैल को है. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू. सो कहां से यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसे मैं बाद में बताऊंगा. फिलहाल तो खाली मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल है. ओके, इसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूं. तो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल गिव्स बिग प्लेयर्स एक्टिविटी. बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं वो समझ में आता है हमें यहां से. सो दिस इज द सपोर्ट, विच मीन्स बिग प्लेयर्स आर सेलिंग ऑप्शंस हियर, पुट ऑप्शन. और बड़े प्लेयर यहां पर सेल कर रहे हैं पुट ऑप्शंस. और साथ ही में देयर इज सम प्लेयर्स सेलिंग अक्रॉस हियर. बहुत बड़ा नहीं है. इफ यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट, दिस इज नॉट वेरी बिग बट स्टिल सेंसिबल इनफ. सो विच मीन्स 17,500 पे कोई एक्टिविटी हो रही है.
बहुत ज्यादा नहीं है. लुक एट द बिल्डअप हैपनिंग एट 17,000. ह्यूज है, ह्यूज. मतलब कोई एंगल से बड़े प्लेयर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे मार्केट 17,000 ये एक्सपायरी को तोड़ेगा. बाय थर्सडे निफ्टी विल नॉट ब्रेक 17,000. बिग प्लेयर्स आर बेटिंग ऑन दैट. ठीक है. नाउ ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई. क्या ये इंपॉर्टेंट है? विच मीन्स दैट you buy and buy until 17,000 is broken. क्लियर है? 17,500 पे जाके रुकेगा, ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है. साथ में वेव थियरी हम कंबाइन कर सकते हैं. सो जो हमने वेव थियरी के हिसाब से निकाला वही चीज ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल से भी पता चलती है. सो ये डार्क कलर है, ये बिल्डअप है, ये आज के दिन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो पता चल रहा है. लाइट कलर कितना आज के दिन में इंक्रीज डिक्रीज हुआ है. तो दोस्तों अभी मैं इस पे और टाइम नहीं स्पेंड कर पाऊंगा. आई वांट टू एक्सप्लेन यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम आल्सो. ये हम ओटीटीए में करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग में करेंगे बहुत डिटेल में. ये मैं आपको बता रहा हूं अभी वॉल्यूम प्रोफाइल. यहां पर देखो फ्रेंड्स, वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे इस लेवल पे आई टर्न सुपर बुलिश. इसके नीचे आई वॉज बेरिश, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू. लेकिन जैसे ही 17,060 स्पॉट चार्ट पे निकला, स्पॉट चार्ट में बोल रहा हूं, ये 17,060 स्पॉट के हिसाब से भी और मार्च फ्यूचर्स था. तो जैसे ही ये लेवल निकला, लुक एट द नेक्स्ट पड़ाव. दिख रहा है यहां पर नेक्स्ट वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, इसीलिए तो निफ्टी यहां रुका है. क्योंकि सबसे बड़ा ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम वॉल्यूम प्रोफाइल. वॉल्यूम प्रोफाइल से पता चलता है वो प्राइस पॉइंट पे कितना वॉल्यूम हुआ है. वॉल्यूम्स आज तक आप नीचे देख के समझने की कोशिश कर रहे थे. आज मैं आपको बता रहा हूं वॉल्यूम्स को इधर देख के कैसे समझना है. ओके, कैसे समझना है वॉल्यूम्स को राइट साइड देख के. ओवरऑल यू कैन क्लियरली सी इट हियर. दिस इज द लेवल विच मीन्स निफ्टी को अराउंड 17,500 से लेके 420 के जोन में रुकना चाहिए. 17,420 से 17,500 के जोन में निफ्टी रुकना चाहिए. ये फ्यूचर्स चार्ट है बाय द वे, सो थोड़ा सा आपको अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना पड़ेगा. आर यू विथ मी? फिलहाल 442 दिखा रहा है बट फ्यूचर्स चार्ट है, तो रिमेंबर दैट. विच मीन्स ऑन द स्पॉट चार्ट 17,420 का लेवल इंपॉर्टेंट है जहां पर निफ्टी रुक सकता है. तो वहां पर लॉन्ग नहीं करना है, वहां पे पुट शॉर्ट करना है. दिस इज नोन एज वॉल्यूम प्रोफाइल. बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी भी देख के आप ट्रेड कर सकते हो. लेट मी शो यू समथिंग एस्टॉनिशिंग. ये बजाज फाइनेंस का वॉल्यूम प्रोफाइल है. नाउ टेल मी, ये ट्रेडिंग व्यू से नहीं है, आई एम गोइंग टू शेयर इट अक्रॉस लेटर ऑन. यहां पर कैन आई से दैट अराउंड दिस लेवल 5740 के आसपास, कैन आई से 40 या 30 के आसपास बजाज फाइनेंस का बड़ा वॉल्यूम हुआ है. Are you seeing the big player activity, the big position build up on Bajaj Finance happened at 5740 level, everyone, which means for me to turn bullish, Bajaj Finance needs to take out this level. If Bajaj Finance moves above 5740, boss, माल लाव ट्रेड मिलेगा. It will be classic opportunity for people to trade once that 5740 level breaks as per volume profile. I am also going to show you Reliance. Later on मैं आपको Reliance के बारे में वापस बताऊंगा and I am going to show that to you again. So फिलहाल तो आप ध्यान इधर रखो. Let me now move forward to the world of time. चले टाइम पे everyone. वॉल्यूम प्रोफाइल हम वापस से बहुत डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए करेंगे दोस्तों, बिकॉज आई नीड एटलीस्ट 10-12 आवर्स विथ यू. आई नीड दैट मच टाइम, देन ओनली आई विल बी एबल टू डू दैट. सो अभी फिलहाल तो मैं नहीं आपको और एक्सप्लेन कर पाऊंगा बिकॉज मुझे आपको टाइम पे बताना है और मून साइकिल के बारे में बात करनी है, लूनार साइकिल. तो मैं चलता हूं आपको मून साइकिल लूनार साइकिल के पास लेके. क्यों चलता है लूनार साइकिल? ये टाइम है. शैल वी गो ऑन द वर्ल्ड ऑफ टाइम?
Shall we, every one of you, shall we enter into the world of time? Okay. Now let me explain it to you, the concept of lunar cycle. Meanwhile, can you tell me when is next पूर्णिमा और अमावस्या की डेट क्या है? यहां पर अगर आप मेरा चार्ट देख पा रहे हैं, यहां पर एक इंडिकेटर है. दिस इज द इंडिकेटर विच विल बी मून फेज. यहां पर मून फेज हम अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. 6 अप्रैल को लूनार साइकिल है, पूर्णिमा. ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ये देख रहे हैं? देखिए दोस्तों, आई एम एन इंजीनियर, आई डोंट रियली बिलीव, आई एम अ साइंस स्टूडेंट. मुझे ये सब चीज में विश्वास था ही नहीं, लेकिन क्या करे, जब ऐसा मूव आता है तो विश्वास करना पड़ता है, मतलब कोई उपाय नहीं होता. आई एम नाउ शोइंग यू समथिंग फिनोमिनल. ट्राई एंड थिंक. कैन आई से 70% of the water planet is covered with water. 70% of the planet is covered with water. If 70% of the planet is covered with water, there is high tide on Purnima and low tide on Amavasya, which means that lunar cycle is impacting every single aspect of the planet. Human body is also 70 to 75% water. So if the moon is powerful enough to move the water on the planet, don't you think moon will be powerful enough to move your energy system? मतलब सोचने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा मूवमेंट जो हो रहा है वो लूनार के कारण हो रहा है. नहीं विश्वास होता. लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. कैन आई से द लूनार साइकिल इज 28 days? डू यू एग्री विथ मी? मतलब इतना तो पता है ना यार, लूनार साइकिल 28 डेज है, भले ही हमने कभी कुछ देखा नहीं इसकी इंपॉर्टेंस को, बट कैन आई से द लूनार साइकिल इज 28 days? कैन आई से दैट द फीमेल बॉडी is governed by this 28-day cycle? If the female body is not governed by this 28 days period, which means that we will not exist on this planet. हम इस planet पे exist होते ही नहीं थे if this was not the case. Are you understanding? Which means that something which is governing our own existence, what makes you say it will not govern everything else? Which means that stock market fluctuation is in turn governed by our emotions and crowd psychology. It is impacted also by the lunar cycle to some extent. इसका मतलब हुआ कि यार हर चीज साइक्लिकल है, समय बलवान है, टाइम से चलता है, समय के पहले कुछ नहीं मिलता है. होता है ना, बोलते कहावत भी है, समय के पहले कुछ नहीं मिलेगा कितनी भी कोशिश कर लो. लेकिन अगर समय सही है तो पत्थर भी सोना बन सकता है. समय गलत है तो सही काम भी गलत हो जाता है. होता है ना. इट इज व्हाट इट इज. टाइम इज सुप्रीम. समय शक्ति है. टाइम इज पावर. प्राइस इज गॉड. सो व्हेन यू आर बाइंग प्राइस, व्हेन यू आर बाइंग अ स्टॉक, आप खाली स्टॉक का प्राइस नहीं खरीदो, आप उसका टाइम भी ले रहे हो. प्राइस एंड टाइम दोनों चीजें होती है. सो इट इज इंपॉर्टेंट. कहते हैं ना लुनेटिक, दीवानगी. लुनेटिक मतलब पागलपन. इट हैपेंस ऑन अ लूनार फुल मून डे. व्हाई? बिकॉज whatever your state of mind is on that day, it gets elevated, it gets pulled up, it gets exaggerated. That is how it happens. It happens even with men, but we don't really know much about our system, but it is very apparent with women. That's how it is. So what I am saying, it works. Now मैंने भी ये सब सोच के बोला यार ऐसा थोड़ी चलता होगा, लेकिन when I first looked at the cycles of moon, I was shocked how precisely it worked. अभी फिलहाल थोड़ा प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन इसके पहले it worked like magic. So over here, what you are seeing here is, this is no moon और अमावस्या. ठीक है. What you are seeing at the bottom is full moon. Full moon, it is also known as पूर्णिमा. Now समझने की कोशिश करते हैं. ट्रेंड चेंज होता है यूजुअली 2 से 3 दिन के लिए ऑन दिस लूनार साइकिल. 2 से 3 दिन के लिए ट्रेंड चेंजेस
on this lunar cycle. That's how it works. Now let us look at that. This was अमावस्या, this was a पूर्णिमा, पूर्णिमा से 2 से 3 दिन का डाउन ट्रेंड आया. दिस वाज अमावस्या, यहां से अप ट्रेंड आया. पूर्णिमा से 2 से 3 दिन का डाउन ट्रेंड आया. यहां से अमावस्या से अप ट्रेंड आया. सोचो ना यार, क्या सिंपली प्रिसाइजली चल रहा था. यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. यहां पूर्णिमा से अप ट्रेंड आया, अमावस्या से डाउन ट्रेंड आया. ये चेंज था. यहां पर वापस से आप देखोगे तो पूर्णिमा से थोड़ा सा पुश ऊपर मिला, ज्यादा कुछ नहीं मिला. अमावस्या से डाउन ट्रेंड आया. अभी 6 अप्रैल को मार्केट में पूर्णिमा है, लेकिन मैं पूर्णिमा पे बाय नहीं कर रहा. मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन के लिए. अगर ट्रेंड ऊपर का है मतलब 6 अप्रैल के बाद में पॉसिबल है 2 से 3 दिन का करेक्शन आएगा. अगर पूर्णिमा के पहले नीचे का है तो हमें लगेगा ऊपर का करेक्ट मूव आया. तो ये पक्की बात है कि ट्रेंड चेंज होगा पूर्णिमा के दिन से, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम कंबाइन करेंगे. तो हमने क्या कर दिया, भाव को देखा और समय के साथ में ट्रेड किया. तो एक डेट जो मुझे मिली, इंपॉर्टेंट डेट है 6 अप्रैल. So lunar cycle is suggesting this up move can come in danger on 6th April. To know, आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? है ना इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. और मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप जाके इसे प्लॉट करो, हिस्ट्री चेक करो, एंड यू विल बी लाइक शॉक्ड. इट इज अमेजिंग, अमेजिंग. इज इट क्लियर? सो 6 अप्रैल का डेट याद रखना है क्लियरली. एंड ओवर हियर वी विल नाउ मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अदर टाइम. ये तो मैंने आपको एक बताया, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों वापस से क्लियरली, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम. एग्जैक्टली कौन से डे पे, कौन से डेट पे बैंक निफ्टी टर्न होगा वो मैं आपको बताता हूं. चले आगे टाइम की दुनिया में. एवरीवन, इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. है ना ये मजेदार चीज समझने वाली. मैं अभी आपको एग्जैक्ट टाइम, डेट सब बताऊंगा, एंड साथ ही में देखेंगे, हम साथ में देखेंगे बहुत क्विकली. लेट मी नाउ जस्ट मूव फॉरवर्ड. लेट मी शेयर अक्रॉस माय पीपीटी हियर. यहां पर अगर आप देखेंगे इंट्राडे के लिए मैं अभी आपको जो टूल दे रहा हूं वो यूज करेंगे आप लोग. ओके, इंट्राडे फॉर इंट्राडे आई एम गोइंग टू शेयर अक्रॉस द टूल विच यू आर गोइंग टू यूज. दिस इज 15 मिनट्स ऑप्शन चार्ट. सोचो, इस पे भी एक जो वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम टाइम साइकिल. इसे कहते हैं टाइम साइकिल. ओके, दिस इज टाइम साइकिल विच मींस इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 87 कैंडल्स है. यहां पर लो बना, अप मूव, लो अप मूव, लो अप मूव, विच मींस एवरी 87 कैंडल लो बनता है. डायरेक्टली ऑप्शन चार्ट पे 17,000 का कॉल ऑप्शन पे आप अप्लाई कर सकते हो. ये मैं आपको खाली एग्जांपल बता रहा हूं. आई एम नाउ गोइंग टू गो एंड अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑल्सो ऑन बैंक निफ्टी चार्ट. बट ये देखते, अडानी एंटरप्राइज, पीपल विल थिंक ये पॉसिबल ही नहीं है. यू कांट फोरकास्ट एन इवेंट. आई एम टेलिंग यू, यू कैन इवन फोरकास्ट एन इवेंट. अडानी स्टार्टेड द लेग डाउन इन सितंबर 2022. ये तो न्यूज तो अभी आई, सितंबर से गिरना शुरू हो चुका था दोस्तों वो 22 से. एंड 1-2 किया, थर्ड कंप्लीट, फोर्थ, एंड दिस वाज फोर्थ होने के बाद में फिफ्थ आना था, फिफ्थ आके फिर बाउंस आना था. ऐसा हुआ क्या देखते. लुक एट इट. फोर्थ वेव कंप्लीट, फिफ्थ वेव केम और यहां से बाउंस बैक. वाओ. यहां पर अभी क्या हुआ, ए कंप्लीट, ये बी बन रहा है, बी शायद कंप्लीट, एंड यहां से हमें वापस क्या मिलेगा, सी लेग बना. जीपीएस गाइस, आर यू देयर? एबीसी 1 2 3 4 5 सिंपल है कि नहीं है?
समझ में आ रहा है आप लोगों को? जीपीएस ऑफ द मार्केट, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, है ना? मस्त। ओके एवरीवन, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड नाउ। केपीआईटी में 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, करेक्शन आया नीचे, राइट। अभी क्या शुरू हो रहा है? थर्ड वेव शुरू हो रहा है शायद ऊपर, थर्ड वेव। नेक्स्ट चार्ट, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, 5 waves forward. Can you see that you can apply this concept? This is neo wave chart. सोचो दोस्तों, ये neo wave है. See, neo wave is an advanced part of Elliott wave. I would say it is developed by Glenn Neely, Elliott wave by R.N. Elliott. Glenn Neely came out with more patterns and more rules to define wave theory, and it becomes so objective. It becomes so fantastic, amazing है. और इसके हिसाब से ये 17115 पे था ना, तभी ये चार्ट पब्लिश किया था कि यहां से हमें अपमूव मिलना चाहिए. नियो वेव है कि यहां से अपमूव मिलना चाहिए, बेसिस ऑफ चैनल, बेसिस ऑफ दिस, एंड लुक एट इट, प्रिसाइज अपमूव. हम मेंटीज के साथ में, हमारा थर्सडे को मेंटरशिप सेशन था, उसमें मॉर्निंग में डिस्कस किया था दैट दिस विल ब्रेक अबाउट द चैनल ऑल्सो, बिकॉज दिस इज flat correction which will break correction. So this is for people who know neo wave. Amazing चला. ये देखो चार्ट दोस्तों, ये एक पैटर्न था नियो वेव में, यहां से ब्रेकआउट मिलना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए ट्रेंड. और देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, दिस इज 15 मिनट चार्ट. ओके, आर यू हियर? यहां से, एंड लुक एट इट, अमेजिंग, amazingly it went on the upside. Can you see that happening here? Every one of you. Can you see that? Amazing है कि नहीं? कहां था? इस लेवल पे था, एंड वहां से देखो. Salman Misri is also here. Salman, it's always great to have you here. He is a mentee as well, and he says that, sir, the KST trading along with cycles have changed his life. I have been in green month, which never happened in past 2.5 years of my trading life career. Amazing, Salman. It has changed his life forever. I'm telling you, this webinar is a life-changing transformation, eye-opener. बैंक निफ्टी आ गया दोस्तों वापस से. चले आने वाले वीक में फोरकास्ट करने, बैंक निफ्टी का टाइम निकाले. लास्ट टाइम शायद आपने अगर सीरियसली ले लिया होता मुझे, तो पैसा कमाया होता था. मंडे को 3:15 का टाइम जो यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी पे देखा था. अभी बैंक निफ्टी का ये कौन सा टाइम है जो हमें यहां से पता चलेगा? बैंक निफ्टी का जो आने वाले दिनों का टाइम है, वो टाइम है यहां पर 3 अप्रैल 12:30. तो 3 अप्रैल कौन सा डे आ रहा है? 3 अप्रैल आ रहा है हमारा मंडे. मंडे को 12:30, 3 अप्रैल 12:30 का टाइम है यहां पर. 3 अप्रैल मैं लिख रहा हूं दोस्तों यहां पर 12:30 PM. मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर गया और यहां से हमें डिप मिली, तो वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक निफ्टी में बाइंग करने के लिए. ओके, समझ में आ रहा है? तो बैंक निफ्टी का जो टाइम है, टाइम कभी है सही, ऑस्पिशियस टाइम. हम गृह प्रवेश के लिए देखते हैं ना कौन सा सही टाइम है. तो 3 अप्रैल को 12:30 बजे हम ध्यान रखेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर. लेकिन एक चीज बताओ मुझे दोस्तों, क्या मैं जाके ब्लाइंडली 3 अप्रैल को 12:30 बजे बाय करूंगा? आई एम आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन. आई वांट एवरीवन टू इंटरैक्ट विथ मी प्लीज, वेरी क्विकली. विल आई बाय ब्लाइंडली ऑन 3 अप्रैल at 12:30? नो. I will combine the first part that we did today of price action. Only because I have my price confirming, I will go and look for buying opportunity if my hourly candle is positive around that area. 12:30 मतलब 12:30 होगा जरूरी नहीं है, मतलब एक भी बच सकता है या 12:15 या 12 बजे के आसपास भी. लेकिन मार्केट से डिप चाहिए, मतलब मंडे को ओपन पॉजिटिव होगा, डिप मिलेगा 12:30 के आसपास, फिर से बाय करके हम चलेंगे मार्केट में. मिला हमें समय, है ना? फैंटास्टिक. तो इस तरीके से हमें बाय करना है. तो जो लोगों ने ट्रेंड मिस किया है उनके लिए 12:30 का समय सही है. देखेंगे प्राइस एक्शन, अगर ऐसा मूवमेंट हुआ तो बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. ये सोचो 85 वीक का टाइम साइकिल है. मैं जून 23 आपको क्यों बता रहा हूं? 85 वीक का साइकिल है, which is every 85 week.
ये टाइम पे लो बनता है, यहां लो बना, रैली 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 रैली, दिस इज इन्वर्जन, मतलब जहां लो बना था वहां टॉप बना, रैली। सोचने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि कोविड में जो लो बना यहां पर वो बनना ही था। कोविड केसेस यहां इंक्रीज हो रहे थे, कोविड 2 आया, 3 आया, मार्केट फिर भी रैली क्यों कर रहा है? बिकॉज वो समय सही था, यहां पर टॉप बनना था। और एग्जैक्टली और अभी नेक्स्ट डेट जो मुझे 2 जून 2023, तो 3 डेट कौन सी मिली? जून 2023 एंड प्रिसाइज 24 जून के बाद में मार्केट बाइंग में जाएगा, अच्छा मोड। एक डेट 6 अप्रैल, दूसरी डेट 3 अप्रैल, तीसरी डेट मिली डेट। आर यू गाइज विथ मी? इजंट दिस फैंटास्टिक? इजंट दिस अमेजिंग? चलिए आगे बढ़ते। आईटीसी, आई बीन टॉकिंग अबाउट आईटीसी सिंस सो लॉन्ग। कितने लोगों ने बाय किया 55 के साइकिल पे आईटीसी को? वापस से आईटीसी 55 डे के टाइम पे आ रहा है। हर 55 दिन में आईटीसी ने लो बनाया, रैली, लो बनाया, रैली, लो रैली, लो रैली, लो रैली। अभी वापस आ रहा है दोस्तों आईटीसी 55 डेज के टाइम पे। क्रूड ऑयल, लोग बोलते हैं यार इवेंट को फोरकास्ट नहीं किया जाता है। ये जो डेट है ना, ये 2022 फरवरी की है, रशिया यूक्रेन वॉर के पहले। हर 115 डेज में क्रूड रैलीज, एवरी 115 डेज क्रूड प्राइसेस गो अप। एग्जैक्टली यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर के वक्त क्रूड प्राइसेस रैली हुआ, प्रिसाइजली। मतलब वॉर तो होना ही था, कुछ तो लिखा हुआ है, हम तो खाली यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लिखा है ना यही चीज तो भगवत गीता में, जो होना है वो तो होगा ही, हम तो खाली यहां पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्रूड प्राइस जाना ही था ऊपर, अभी रशिया यूक्रेन वॉर तो कारण बन गया। यहां पर देखोगे क्रूड ने अपना लो निकाल दिया है। इसका मतलब ये जो टॉप है क्रूड प्राइसेस का 7,000 के आसपास, 7,200 है शायद ये लेवल, वो ब्रेक नहीं होगा नेक्स्ट 55 डेज तक। और मतलब ये हाइप बना रहेगा क्रूड में फिलहाल के लिए। दैट इज हाउ यू कैन फोरकास्ट टाइम। गैन स्क्वायर ऑफ 9, गैन के बारे में दोस्तों हम करेंगे मास्टर ऑफ वेव्स में, बट क्या चलता है ये। 17,227 का लेवल था, मार्केट यहां से नीचे आया, 227 निकाला, नीचे का लेवल देखो यहां तक आया, निफ्टी निकाल के इधर अभी नेक्स्ट पड़ाव अगर यहां सस्टेन किया तो 17,756। इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा, हम मास्टर ऑफ वेव्स में गैन के बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में। लूनार साइकिल के बारे में मैंने आपको बताया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट देखिए दोस्तों, 2330 के लेवल पे ये बंद हुआ। ये चार्ट मैंने लास्ट वीकेंड दिखाया था, ये चार्ट वापस आज दिखा रहा हूं मैं आपको। 2330 एक मैग्नेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, वेव काउंट के साथ में बता रहा हूं। मैग्नेट, ये एक मैग्नेट है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज 2350 के ऊपर बंद होता है डेली क्लोज, तब हम बोल सकते हैं कि ये नेक्स्ट मैग्नेटिक लेवल तक जाएगा। यहां पर जो लेवल है 2430 का। आर यू गाइज विथ मी? अगर रिलायंस 2350 के ऊपर बंद होता है तो हम दूसरे पड़ाव पे जाएंगे 2430 तक। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं और क्या क्या है इस चमत्कार में। दिस इज अबाउट निफ्टी अगेन, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इट इन अ वेबिनार। प्रिसाइजली वैसा मूव आया ऊपर में। ये है सेंसेक्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन बताया जो आपने देखा। ये रिलायंस का चार्ट 2017 में वेव थियरी के बेसिस और टाइम के बेसिस पे फोरकास्ट किया था। एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट हैपेंड। दिस इज अगेन निफ्टी फोरकास्ट बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ नियो वेव की एफ ऊपर आएगा, जी नीचे आना चाहिए और फिर ऊपर रिवर्स होगा। एग्जैक्टली देखो वैसा ही मूव आया निफ्टी पे। ये है 2015 का चार्ट। इमेजिन फ्रेंड्स 2015 में भी ये, आई एम अप्लाइंग दिस कॉन्सेप्ट फॉर मोर देन 10-12 years. दिस इज 2015 चार्ट कि यहां से नीचे एक लेग आना चाहिए, देन वी विल सी अ बाउंस बैक ऑन द अपसाइड। हुआ क्या? एग्जैक्टली नीचे एंड
it bounced back on the upside. Precisely. Look at it. Every single move is as per time and wave pattern. Every single move. And option trading अगर आप करते इस टेक्निक पे, you will be shocked. क्योंकि options के लिए time is the most important thing and most amazing. It's a classic saying, दोस्तों, only you and you alone can change your situation. Don't blame it on anything or anyone. लोग बोलते हैं ना, फेड ने रेट हाइक किया इसलिए मैंने लॉस कर लिया, यहां पे कुछ हो गया इसलिए लॉस कर लिया, अडानी का इवेंट हो गया इसलिए लॉस नहीं. इफ यू लुक एट चार्ट, प्राइस इज गॉड, भाव भगवान छे, समय बलवान छे. इफ यू फॉलो दिस मंत्र, you will make money. You have to take that step forward. You have to take that action and you will be able to make money from the markets. I want to ask all of you, do you want me to be associated with each one of you and guide you as a mentor for your journey on trading career? मैं आपको पूछ रहा हूं, do you want me to be there as an association with you for lifetime, to be mentor who is guiding you in every single step? Fantastic. चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं लोग. कि मैं कर सकता हूं ऐसा जरूरी नहीं है, क्या लोग कर सकते हैं सीखने के बाद में. बेसिस ऑफ टाइम, दिस इज फ्रॉम द रीसेंट, और ये अभी का है दोस्तों, ये पहले का नहीं है. दिस इज नाउ. निफ्टी फॉर्म द लो एट 130, अप बाय 140 पॉइंट्स लूनार साइकिल के बारे में. एंड यहां पे लिखा है कमल ने 1230 गॉट 70 पॉइंट्स ऑन निफ्टी. एग्जैक्टली यहां पर लिखा है मैंने वापस से 17,060 का लेवल. दिस वाज ऑन 29th मार्च मॉर्निंग. 11:15 के बाद में अगर निफ्टी 17,060 निकाला, टाइम विल बी अप. अनुराग शर्मा, he mentioned, I have been seen the GPS of market with you since 2021, learnt a lot of new way from you just visiting Ashish Kyal Trading Gurukul. One must learn if forecast market from minute to centuries. ये मैं नहीं कह रहा, लोग बता रहे दोस्तों. ये देखो आपके सामने प्रूफ है. फैजल बाबू, he just messaged yesterday, कल ही इन्होंने मैसेज किया. he is a mentee, amazing mentorship. I was net 10.7% loss prior to joining the mentorship in July. Today financial year 7.77. the power of mentorship, it helped him. It said that I turned profitable for the very first time in the year. यहां पर देखो, Suresh Kanur has mentioned how he has made 40,000. These are from the mentorship. Bhavan Singh, 37,000, trading stocks, options, everything. This is from the latest current batch of mentorship. Narendra Mulani, he has mentioned both sides trade works superb, almost double option trading. Sideways market में भी दोनों बाजू कमा रहे. Shubhendu Shekhar, mentee, I have shorted 29th March, 850 points का कमाया उन्होंने. Current MTM is 21.5 lakh. Imagine. Here again, thank you so much for the conviction, Aditya Kulkarni. 35 lakh का 1.26 lakh bought yesterday EOD. Jinal Bhanushali, BMW batch 22. I cleared my NCFM levels with the help of your videos, your book and training. She is from the BMW batch of 2022. Become Market Wizard, जिसमें हम OTT और Master of Waves करते हैं. यहाँ पर देखिए सुरेश, again 1,27,000 trading stocks. He picks up stocks amazing. The way he is picking up is classic. And Bhavan Singh is like superb. Basic techniques brilliantly work. 2.35 lakh profit. Mukesh Jain, 5 lakh in less than a week following your analysis and videos. Learned a lot. Salman Mistry, मैंने already share किया. 9k profit on a 30k capital. बनता है. Never this interesting. Trading was never this interesting. यहाँ पर Nilesh Pawar went from 4 rupees to 115 rupees. मैंने put लिखा था ये, और नीलेश पवार ने लिखा 18 रुपए पे कैप्चर करके 678 था, 605 पे बुक किया. 18 रुपए का पुट जब मार्केट गिर रहा था, वो टाइम का बात कर रहा हूं. और ये लास्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं. यहां पर देखो, इन द मॉर्निंग यू वेटेड फॉर द डिप. मैंने कहा था मॉर्निंग में निफ्टी खुलेगा ऊपर, डिप आएगा और बाद में बाइंग इमर्ज होगी. वेटेड फॉर द डिप, इट केम, मजा आ गया. डिड नॉट ट्रेड बट वाज वाचिंग योर एनालिसिस.
what amazing way to look at markets, you know, people are just amazing. Master of waves का session attend करके Pinkesh Jain, he is doing scalping trade, 1 minute trade he is doing. यहाँ पर Srinath has traded clearly. Market went up as per my prediction, gap up, down in second half mentioned yesterday. वही catch big moments, profit catch कर रहे लोग, कर रहे दोस्तों, ये चलता है मेथड. And यहाँ पर Hank, on Sunday webinar you said about gold hitting 59,000 once it crossed 56. It's follow target on the screen. Amazing. You know, people are just loving it. This is again from the last webinar, ये last week की बात कर रहा हूं मैं. A roller coaster ride. यहाँ पर Shubhendu is mentioning clearly that capital deployed 2.8 CR, profit 2.1 CR. Thank you all. This is financial year 23-24 May. We will be together. He has mentioned clearly how he is benefiting from this mentorship program and other things. So Harish Pathak, good to be a part of Mentor. This group able to capture 1,000 points on Bank Nifty from 10th March to 17th March. So, you know, people and simple technique यार, open interest, Bollinger Bands, Candlestick जो हम करने वाले option trading using technical analysis में. So people are able to do that. I am asking you, do you want to be a part of this wonderful journey which we call as become market wizard? Become BMW सबको चाहिए ना दोस्तों. तो ये दो कोर्स combine करता है, option trading plus master of waves, both are combined in these courses. So this is going to be, let me now explain it to you. What is this about? Option trading program is happening on 15-16 April. Live है, ऑनलाइन लाइव इवेंट हो रहा है. यहां पर हम करने वाले क्लियरली वी विल लुक एट वॉल्यूम प्रोफाइल ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए. साथ में वी विल बी लुकिंग एट ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, वॉल्यूम बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो हम देखेंगे. इसके साथ में आई एम गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू क्लियरली पे ऑफ चार्ट्स कैसे फॉर्म करना है. ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास, ऑप्शंस बाइंग मास्टर क्लास है ये दोस्तों. ऑप्शन बाय करके कैसे वो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना है, विच इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम. प्लस आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग यू Ichimoku Cloud with 5 trade setups that I'm going to give across to you all. This is happening on 15th or 16th. And if you are registering today for this event, you will be getting 5 bonus videos for lifetime. 5 bonus videos for lifetime. You will be getting pre-session video. Pre-session video आपको मिलेगा दोस्तों before this OTTA starts. Then there will be recordings of this session that will be given to you, in which we are also going to cover this time KST time indicator with Bollinger Band breakout technique. I'm going to give you 5 trade setup clearly जो आपको खाली यूज करना है ट्रेडिंग के लिए. 5 trade setups option buying के लिए. I'm going to talk about how to generate passive income from trading and selling option. उससे passive income आपको जॉब है, आपको मार्केट नहीं देखना है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट. इफ यू आर रजिस्टरिंग टुडे, यू विल ऑल्सो बी गेटिंग अलोंग विद दिस, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 month ऑफ रिसर्च रिपोर्ट ऑफ निफ्टी. आप प्रैक्टिकली देख पाओगे कैसे करना है. प्लस इसके बाद में देयर विल बी अ फॉलो अप सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, वेयर यू विल बी एबल टू फॉलो अप सेशन, वेयर यू विल बी able to ask questions, doubts, queries, ये भी होगा. प्लस इसके रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएगी आपको for a period of 15 days so that you can go through it again and again later on. The bonus is the videos that I am talking about will be valid only if you are registering today for this program, and it will change your way. The master class of option buyers, जो लोग मल्टीप्लायर इफेक्ट, एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी क्या होगा, एक्सपायरी डे पे कैसे हमें ऑप्शंस को ट्रेड करना है वो हम करेंगे. एक्सपायरी डे स्ट्रेटेजी भी हम फॉलो करेंगे. एंड इट्स सिंपल, इजी है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे. अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ मास्टर ऑफ वेव्स देखते हैं, मास्टर ऑफ वेव्स वी आर गोइंग टू लुक एट नियो वेव. अगर आज रजिस्टर करें, यू विल इमीडिएटली गेट एक्सेस टू एलियट वेव वीडियो लिंक्स.
आज के दिन ही मिल जाएगा। प्लस वी विल बी लुकिंग एट टाइम साइकिल। इसके साथ में दोस्तों हम कंबाइन करेंगे गैन को भी, गैन स्क्वायर ऑफ 9, एंड ये साथ में स्टेप बाय स्टेप वी विल आल्सो बी लुकिंग एट हाउ इचिमोको क्लाउड कैन बी यूज्ड। और ये दोनों प्रोग्राम को कंबाइन करके हम मास्टर क्लास फॉर्म करेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग यूजिंग एलियट वेव। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट ब्रिलियंट वे। यहां पे आप फोरकास्टिंग सीखेंगे, कैसे मार्केट को फोरकास्ट करना है। यहां प्राइस एक्शन देखेंगे, बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी करेंगे, और दोनों को क्लब करके हम कंबाइन करके बोलते BMW, बिकम मार्केट विजार्ड। बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर कंबाइंड। मेंटरशिप अगर आप करते हैं, यू गेट एक्सेस टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, प्लस you get access with me for lifetime of association in mentorship. Private Telegram group, you get access to private Telegram group. Exclusive webinars, even after 3 months of mentorship is over, you get access to exclusive webinar, which I'm going to conduct every month for you people of mentees. You get access to Master of Technical Analysis videos today itself. चलिए एक और काम करते हैं, जो लोग BMW के लिए आज रजिस्टर कर रहे हैं उनको भी मैं मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो देता हूं। अगर आज आप रजिस्टर करें, यू गेट मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस प्लस 10 बोनस वीडियोस BMW वालों को। सोचो यार क्या वैल्यू मिलने वाला है आपको। अगर आप आज मेंटरशिप के लिए करें, यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू मास्टर ऑफ साइकिल्स वीडियो, प्लस यू विल गेट एक्सेस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट course that I am talking about, KST trading. Plus you are a part of option trading program. Plus you are a part of master of waves, plus Elliott Wave. Plus I'm going to handhold every one of you completely. We will form risk management, money management, stock selection, sari cheeze. We'll meet on Saturdays live. Apart from that, you get all of those things. So are you excited to be a part of this journey with me? Every one of you, I'm asking you, will you be a part of this journey with me on creating traders? And the value that we are generating is phenomenal. The pricing for BMW valid only for today with the bonus video is 32,000. How do you register? You can simply use the link. My colleague is sharing across the link. Use that link and simply register yourself. I'm telling you again what all things you get here. You get 10 bonus videos. Plus, along with that, you get over here access to Master of Technical Analysis 12 hours of video. Plus, you get Elliott Wave का video links. ये तीनों आज ही मिल जाएगा। अरे दोस्तों, इसका वैल्यू अगर आप देखोगे ना, तो इसका वैल्यू 22K है, इसका वैल्यू 10K है। बोनस वीडियोस का वैल्यू अगर अब if you realize 20K, you are actually getting a value which is worth 52,000. Even before the actual live session happens online. 15-16 अप्रैल को हमारा सेशन है जो ऑप्शन ट्रेडिंग पे, एंड 6-7 मई को हमारा सेशन है जो मास्टर ऑफ वेव्स में। You get all of those. So you get access to master of waves option trading program, but you have to take that step forward and be a part of this BMW today itself. If you just don't want to be with BMW, you can register for option trading program. 19,500 आपको प्राइस ये कहीं नहीं मिलेगा. It's not there even on the website. You can go and check this pricing of 19,500. What will you get? Master class. This is options trading master class I am talking. You get complete strategy. आज के दिन क्या मिलेगा? 5 bonus videos you will get, plus you get 1 month of Nifty research report. If you are a part of BMW, you get 1 month of equity research along with it as well. What more do you want, guys? And master of waves अगर आप register करें, you can be with Elliott Wave, learn that science of neo wave, forecast the market right now. How many of the testimonials I have shown it to you, you can simply forecast the market and do it yourself. So that's become market wizard, guys. It will change the way you ever see. You know, I have a resort in Lonavala. It went, you know, COVID time में बंद था, but I knew markets and I was able to trade basis of my knowledge, understanding and everything. Even if it was shut, I was able to do that. Why? Because
I knew markets. Parallel source of income. I own that place, Cloud9 Hills Resort in Lonavala, my own resort. I sit there. I was enjoying time with my family, not worried about what's going to happen tomorrow because markets were there and I was knowing how it works. So this is BMW is 32,000 plus taxes. So ensure, how do you register? You can simply go on this link and register yourself from here. Okay. You can register yourself. You get everything today itself plus live event. Uska recording bhi hoga. Original price is दोस्तों 98,000, but today if you are registering 32,000. अगर आप OTTA और मास्टर ऑफ वेव्स भी सेपरेटली लेते हो तो भी प्राइसिंग आप देखो कितना होता है. You can do that, okay, and you can clearly able to trade it. So you can simply take that step forward. I'm taking a very quick poll. Which path do you want to select to be along with me on this journey of becoming market wizard? I'm taking a quick poll right now with all of you. I want to know which path to financial freedom. Okay, Yogesh, you want to be a part of this? Fantastic. You can simply be a part of BMW. Use the link that I have shared across with you all, and you can just register there. Rajan, Master of Waves is all about wave theory. So Master of Waves में हम करने क्या वाले? We will look at Elliott Wave, we'll look at Neo Wave, we'll look at concept of time and combine that together. So I want you to learn this complete science. MOC is not there. MOC is only meant for mentees right now. It's not for anyone else. MOC is about pure time, nothing else. But only with mentees. If you are a part of mentorship, then only you have MOC. Right now, you can register for Master of Waves. We will cover some aspect of time also, जो मैंने आज आपको बताया है, कैसे सबको क्लब करना है साथ में. Okay. Sonu, sign me. Great to get you on board as well. Fantastic. Mr. Raghunathan has joined BMW. Fantastic, Raghunathan. Great to get you on board for this BMW program. And over here, I'm going to also check with you all what questions you have. So I'm taking up the questions. Participate in the polling, guys. See, I'm telling you, this will change the very way you ever see the market. It's going to change your entire perception about the market. Ever. This is life transformation. I'm telling you. Okay. I'm taking up the question. Sir, do we need any software? No software required. I will tell you if you need anything. Right now, you can do it with free software. Secondly, right now you have to understand one thing very clearly, that capital requirement कम से कम यार 1 लाख रुपया चाहिए आपको, क्योंकि उसके बिना आप ट्रेड क्या करोगे. You can buy options, but still at least 50,000 होगा तो थोड़ा थोड़ा कुछ कर पाओगे, लेकिन 1 lakh capital requirement is what I would suggest you have. If you are option seller, then I would suggest at least you should have at least 2 to 3 lakh capital requirement for option selling. लेकिन हम option buying भी करेंगे. So क्या option trading में खाली हम options देखेंगे? नहीं. We will also look at stocks trading कैसे करना है. So it is not only for people who want to trade options. You can even trade stocks also. Okay. So don't worry on that. And remember, this is a science. I want you to trade fearlessly, not डर के नहीं करना है. Once you know the GPS of the market, once you know wave theory, you can trade fearless. I'm telling you, it is possible to do that. And stop loss hunting से बचना है. होता है ना कि कोई बैठा है, हमें ही देख रहा है, हमारे ही स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और ले जाता है पैसा. वैसे नहीं, क्योंकि हम एक साइंटिफिक अप्रोच देख रहे हैं. एंड दोस्तों, ये 100% नहीं है. Many people who want for 100% nahi hai. I'm going to be honest with you. I'm upfront with you. This is a science of probability. Okay. So you don't need a software. Minimum capital 1 lakh rupiya chahiye. What you have to also ensure, you are going to follow the trade setup I am going to give you step by step. आपको follow करना है. Option trading में जो हम करेंगे वो आप immediately next day से apply कर सकते हो. Wave theory में जो हम करेंगे उसके लिए आपको practice करना होगा. I am going to help you out with that. Someone is asking, sir, how do we learn? Hand holding कैसे होगा? Post the session is over,
you will be having a follow-up session after 10 days, 12 days के बाद एक follow-up session लेंगे. साथ में you will be able to post your charts on Traders Forum, which I will respond every one of you. Okay, so we are going to do that in a very systematic step-by-step fashion. So don't worry. The next question is, sir, I am a fresher. Can I apply this concept without prior knowledge? You don't need any knowledge, prior knowledge. I'm going to give you a simple mantra. You just follow that. It will happen. I am going to teach you option strategies. Yes. So, अगर आप options के बारे में कुछ नहीं पता, don't worry, because we will give you clearly. Okay. Sonu, sign me. Can you drop your number so my colleague can contact you? You have some queries, so she can just call you up and explain it to you. Just drop your number, please, on the chat. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज. आई हैव टोल्ड यू ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करेंगे. वंदना, you can be a part of mentorship also. Fantastic. If you are a part of mentorship, then you get the BMW right now itself. So you can register for mentorship. No problem on that. And the next question is, can we play in futures as well? Yes. तो जो हम KST breakout strategy करने वाले हैं ना दोस्तों, that strategy in option trading, KST plus Bollinger Bands combined with volume profile, you will be shocked to see. अगर आपको आपका मल्टी बैगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या मोमेंटम स्टॉक सिलेक्ट करना है, ट्रेड करना है, you will be able to do that. If you want to trade futures, you can trade futures also in that option trading program mein. So don't worry, it's not only options, it is can be applied on every other method also. Vandana, you can drop your number also, and my friend Vinod Bagga asked me to join the session. I must say it is worthwhile. Thank you, Rahul Katyal. Great to see that it is worthwhile for you, and it is fantastic. So जो भी आप action ले रहे हो आज लेना. Okay, so that is very important. Dharmendra, we will do this technique. It is going to generate returns you can't even imagine, but you have to do it disciplined. Is it 100%? No, it's probability. Loss bhi hota hai. I'm going to give it, but you have to take that step. You have to discuss what is going wrong. I will guide you. Don't worry about that. Okay. Can I apply it on commodity? Of course, it will be applied on commodity also. Don't worry. जो भी हम methods करेंगे, everything. I've shown you charts of gold and other things also. Will OTTA sessions be done by you? Of course, Amitabh. I am the guy who is going to conduct OTTA, Elliott Wave. Every single session is going to be by me. Just be rest assured on that. It's going to be by me. So just keep that in mind. Okay. I can see over here. What is the investment for intraday? See, for intraday, agar aap trade kar rahe ho, as I said, you need at least 1 lakh capital. 50,000 होगा तो भी आप stocks कर सकते हो, option कर सकते हो. Think of doing it, but I would say it will be this thing. This is online, not offline. No physical classes are happening because there are people from around the globe who joins in these sessions. And dosto, we have only limited seats. So just keep that in mind also. Okay, so I'm done now. Mahesh has joined this program. Thanks, Mahesh, for getting on board for BMW. Vinita has joined the program. Fantastic, Vinita, to get you on board for the BMW program. You will get what all things I'm again repeating. You get 10 bonus videos, Elliott Wave ka video links. You get access to Master of Technical Analysis 12 hours video today itself. You will be a part of live trading sessions of OTTA, part of live trading sessions of Master of Waves, follow-up sessions. ये सब आपको मिलेगा. तो आज के दिन में आपको बोनस वीडियोस, MOTA, Elliott Wave मिलेगा. 1 month research report मिलेगी, which will start all of those things. So don't worry, sit tight. You will get it here today itself. Ramotar has joined in. Fantastic, Ramotar. You have joined OTTA. Lovely. Great to get you on board. And guys, we have limited seats. So my team will have to check how many we can take more. Fantastic, guys. So be a part of this journey. It's going to be amazing. Life transformation. That is what I can commit to all of you.
Over here, I will just quickly just complete. This is the QR code. Take a snapshot of this QR code for BMW program, and you can be a part of this program. You will simply love it. You can take a snap of this. Key takeaway: stop loss is important, of course. उसके साथ ही तो trade करना है, and you will be amazed because, and guys, this is not an investment. This is not a movie ticket. It's not entertainment. This is an investment in knowledge, which is going to be with you for lifetime. That is what I can tell you. Mentorship has changed my life. Chaitanya Shukla, he has mentioned that. Myself, skyrocket high. It's fantastic. Hussein has mentioned the way the role price movement was alien. It's amazing how price time relationship exists. Sovendra Banerjee, program has done excellent in this program about mentorship. So I've already explained what you get in this mentorship program. All of these things are mentioned here. You can have lifetime of association. Quick disclaimer, guys, we are SEBI registered research analysts. This is a disclosure. Keep that in mind and save this number for your financial freedom. I want you to deal with your problem by becoming rich. It's important that you know that, because people think, what should I do with money? First, make a lot of money. Then you say, what do you have to do with money, right? Okay. So become a wonderful trader. These are the coordinates, guys. And so many of you have got onboarded today also. Fantastic, guys, to get on board. Thank you very much for joining me here, Mahesh. I can see you getting on board. It's amazing. Vinita, fantastic to get you on board also. Jigar, get you on board on OTTA. Venkat, you as well. Lovely, guys. It's amazing. I'm glad that it helped you to get on this. Mana, great to see you also here. Sulochana Rao, the mentorship cost is 1,20,000 plus taxes. You have to check it on the link which I have shared across. So you will get all the info from there. Great, guys. This is Ashish Kyal signing off. And thank you everyone for being with me here on this beautiful Saturday morning. I'm sure you will become a wonderful trader, a fearless trader, and see you on 15th and 16th for option trading program. It's going to be a fantastic journey we are going to have together. Thank you, everyone. Have a wonderful time. Become a wonderful trader and have a wonderful weekend. Ashish Kyal signing off.